सॉरी ब्रो, मैंने लॉ ऑफ डिमांड की वो डेफिनेशन रटी थी 12th क्लास में, कभी तक याद है. क्या है बता. Law of demand states that there's an inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded. If price falls, quantity demanded rises. Price rises, quantity demanded falls, remaining other factors constant. Guys, welcome back to another episode of the Podstarz, where we have the biggest headphones, we have the biggest microphones, but we have the smallest penises. We have another guest who I have a feeling is well endowed, but you can never be so sure. Sure. You can never be so sure with them. Please give a big round of applause to Chirag Khanna. हमारा इंट्रो हर बार ही चेंज हो जाता है थोड़ा लाइक इंट्रो वो पीनसेस वाला पार्ट सेम रहता है, बट राउंड ऑफ अप्लॉज और ये वो डिपेंड करता है हाउ मच आई लाइक द पर्सन हुज ऑन. सेम ही रहता है. क्या चीज? तो पीनस तो आई गेस एक क्राइटेरिया है. यू हैव टू हैव अ स्मॉल पीनस टू बी इन द पॉडस्टार. या पार्ट ऑफ द पॉडस्टार्स, ऑल्दो वी प्रेफर आवर गेस्ट्स टू बी. चिराग से डिक पिक मांगी थी बुलाने से पहले एक बार, एंड दैट इज कंप्लीटली लीगल बिकॉज़ दिस इज अ नॉट AIB. Did you get that joke? Yeah. AIB वो के लिए कुछ sexual harassment का कुछ हुआ था ना AIB का. Really? Yeah. That's why they got cancelled. इसको भी नहीं पता था, केशव नहीं बताया था इसको तो. हाँ, Keshav guys, oh fuck, we didn't tell everyone guys. So basically You can't tell them I'm back, you can tell them why Keshav is not here. अभी AMK भी गया हुआ था, we never told the fans why AMK was not there and nobody asked. I promise you that one. दो comments आए थे वो वाले उसके Cool t-shirt. जुमरू वाले एपिसोड ने कि AMK ने छोड़ दिया क्या तुम्हें. तूने हमें छोड़ दिया. हाँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया. AMK, this episode is not about you भाई. बंदा आज वापस आया and he's already, this is why he was good. I'm the guest. Oh fuck. I'll wear sunglasses Also too now. Chirag in the middle, इसमें middle वाले में guys, Chirag got me these shades and right now we both are, I wouldn't say we're on the same levels of fashion because Chirag is particularly a fashion influencer, but right now I'm closer to him than I would usually be because of my shades. Kurta looks dope. I had to balance it out because Chirag was flexing on us with his, what would you say this is? Adidas t-shirt. Videshi outfit? Videshi? It is. Chirag, mic ke paas aa. I won't say Videshi for sure. Why? This is Videshi. This is partially This is Videshi. a very Indians are supposed to dress like this on average. Indians are, every Indian you see is roaming around. No, if like at like what, this is Indian wear. If this is what true Indians wear. This is not Indian wear. This is You're wearing a kurta. You're not wearing. Okay, what are you wearing? This is exactly not in the Indian wear, you know. the point is कि ऊपर से सबको लग रहा है Indian but wear it's है. still not a kurta because it's like Yeah. It's that's like a not half Indian kurta. wear. I've seen a lot of white people wear this. What? Yeah. Which white person? जो hippie white See, people होते he हैं. knows. Yeah. Hippie. So if you go to a कसौली टाइप जगह पे they'll be like, वहाँ पे ऐसे बैठे हरे राम हुए हरे कृष्णा, पूरा कल्चर होता है. होता तो है. Yeah, you look like that. अगर ये white होता ना तो थोड़े से गोरे होते तो. लग रहा है तू बहुत फूकता है. कितनी बारी गया तू उन जगहों पे? मैं never. झूठ मत बोल. Never been. Considering how comfortable you were making this road trip, Chirag had no complaints. Yeah. उसने मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि 2 घंटा दिखा रहा है दूर मेरे घर से. But So excited exclamation mark. It's a fucking road trip भाई. Sorry bro. He is using it like an inhaler. Yeah, I got an attack. Chirag has vape asthma. उल्टा है उसका. I was seeing the reaction. You were like, क्या हो गया इसको भाई, ये ठीक है ना मेरी पॉडस्टार पे आके. भाई साले मेरी पॉडकास्ट पे आके अगर तेरे कुछ हो जाता तो फिर क्लिप्स निकलती उसकी. हाँ एग्जैक्टली. हमारे ऑलरेडी 2 लोग मर चुके भैया, फिर आके उनके एपिसोड नहीं निकाल पाए. तो मेरे को क्या यूज करते clickbait. Everything is clickbait. Everyone is content. By the way, we still haven't told people, guys. Basically, Keshav got COVID. Pray for him. Although he's fine now, but he is. उसका अभी कल ही नेगेटिव आया तो उसको 2-3 दिन बाद आएगा वो. हम तो केशव को बोल के चिराग को बताने की जरूरत नहीं है, तू आ जा. देखो कोविड because we don't believe in COVID. हमने बोला था. I do. Okay, so please speak for yourself. Oh yeah. But if you say it out loud, I don't believe in COVID. You know how many people backlash you? No, that's fine. Like, if you've lost any family members, I'm sorry for you, but I don't believe in it. I'm kidding. I know people who have died. I do believe in it, but I don't know what the whole... So dark well and you're played. smiling while talking. Well I know people played. who died. Well played, man. But, well played. See, I know people who've died personally also, but I still don't believe in the whole thing. Like, I don't believe the story of the whole thing. Let's put it like that. Like, I don't believe that this was born in a fucking lab like this was randomly.
एक ऊपर The bat source है. is still not out. वो भी confirmed नहीं. It's like a theory. कि No, but bat था, ये था, वो they था. say that कि वो bat से बहनचोद क्या था वो क्या पी से था ना वो जो चूतिया that ugly looking little creature. What's that fucking? I don't remember exactly. Not a platypus. Comment. What Guys, comment down below what that fucking thing is. But it was basically it went from a bat and it fell. उस पे apparently उसकी टट्टी वट्टी गिर गई थी. और That's फिर not true. This is a theory. This is a fucking theory. ऐसा हुआ नहीं है. But this is a theory that is mostly believed. Yeah. Like this is a agreed upon theory. But what I truly believe, now YouTube don't censor me, but what I think is actually what happened was that this was a population control method or something. There was something behind this because COVID cannot just be कि आधी दुनिया बहनचोद मर गई or it was nothing. Like I don't buy that. It was something more than just that. Anyway, coming back to I don't think this is an argument we need to get into. Yeah. yeah, this is one argument that can go very very deep. Coming No, back to that's not why I don't want to get into it. why then? You can't talk shit about COVID. I'm not talking shit about it. I'm telling you my opinion on COVID. You And just don't believe it. मैं आज इसको नहीं, बोल नहीं, रहा नहीं. था. Now my whole perspective towards COVID has changed. Guys, मेरे को यही ओपिनियन चाहिए था हम- बस अपनी लाइफ सॉर्ट करने के लिए. Comment कि below ऐसा if you क्यों agree. हो रहा है? हम लोग मास्क पहन के क्यों जा रहे हैं? अब समझ आ गया. और अब नहीं पहन रहे बट अब वापस आ गया है भाई. इट्स लाइक वियर्ड. और भाई आजकल तूने देखा अभी मैंने आज स्टोरी लगाई थी टमेटो फ्लू के बारे में. हाँ. तेरा क्या कहना है टमेटो फ्लू के बारे में? मेरे को तेरा क्या कहना है इतने सारे फ्लूज के बारे में? समझ नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा. अच्छा लगा. Why tomato flu तो I don't know. Why do they keep these names so weird? Like first off, when you're guessing tomato flu, what would you think if nobody's ever defined tomato flu for you? I honestly have nothing in my mind. When तुम टमाटर खाते हो तो yeah, it's बीमार हो very जाते हो. कुछ भी मतलब yeah, you would. I think see the obvious thing would be कि tomato flu is कि टमाटर खाने पे बीमार होना. But what was it? I think the symptoms were that you would look like a tomato. What the fuck? yeah. Really? और I उन्होंने think so. टोमेटो फ्लू नाम दे दिया. I think you get red and shit because of getting it, so they just started calling Because it there's a tomato lot of flu. misconception when it comes to these flus. जैसे अभी monkeypox हुआ था. ठीक है, monkeypox पे क्या हुआ कि UN and WHO had to issue an order where they were telling people not to hurt monkeys क्योंकि मादरचोद लोग जाके बंदर को harm करने लग गए. And Monkey flu से क्या है? people were also saying that gay people are only getting monkeypox. नहीं, okay, so when I was okay, so I went to Phuket. Okay, Yeah. like 2 months back, like a month back probably. So I was going to Thailand and I was getting I went with the family, ठीक है, initially. हाँ. And उधर से I'm getting phone calls, ठीक है. रैंडम कजन्स के पापा को फ़ोन आ रहे हैं, सुनो वहाँ पे तो इतना मंकी पॉक्स फैला हुआ है ये सब. फिर पापा हमें फ़ोन करके कह रहे हैं तुम जहाँ पर भी हो वापस होटल आ जाओ, मत घूमो ज़्यादा, मंकी पॉक्स फैला हुआ है. मैं और हमें पता था मंकी पॉक्स क्या होता है. मैं हम सेक्स थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर आके जो मंकी पॉक्स होगा. But monkeypox particularly sexually transmitted. It's Yeah. only sexually transmitted. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होता है. Oh fuck, that's अब good मैं then. थाईलैंड जाके ऑफ कोर्स एक दिमाग में रहता है ना कि तुम यही पापा कर would रहे हैं. obviously think कि वो तो कर Thailand आया करेंगे. मसाज हबीबी. मसाज है भी दुबई थोड़ी गया भाई. People thought I'm Arab. Why? ठीक है, I don't know. I was wearing Over there? Yeah. I was wearing good clothes and had that like wavy hairstyle beach look So kind of. are you trying to say that because you were wearing good clothes, you were obviously not Arab? इसलिए ये तो पक्का अबू धाबी से आया. Yeah. People thought I was Arab. I was wearing like decent clothes. I had the like curly wavy beach kind of hair, but Yeah. like it looked very curly. हाँ. So they thought I was Arab. So like I was walking on the streets और मेरे को सिर्फ एक ही आवाज आती थी, हबीबी मसाज. ऐसे कर रहे हैं. Like, हाँ. yeah. What the hell, मैं Wait, बहुत time this- से I this- haven't this been to shit one of is- these places, so I don't know. Same. I Thailand went is after pretty popular. like No, years. I know it's popular, but I haven't been in a while, so I don't know. This Habibi massage life, I haven't been, Yeah, it's very I fun. haven't though. experienced it. And I met a few friends there too. Very fun, as in the massages are very fun. They are also very fun. Yeah, Apart from they're the fun. They are fun. apart from the other things, Yeah. guys. That's I can't say anything. Fun. that's proof that Chirag also has sex. Basically, हम लोग we don't like to call virgins. Yeah. We want people who've at least experienced a little bit of virgin vagina. तो Even our गरीब- audience has. गरीब or लोग। anything or anything. It's not just particularly vagina. Oh sorry, AMK का जूता है, इसका तो जूता बहनचोद. Fashion influencer के जूते भी नहीं रख सकते पैर. Apart from Chirag, oh that reminds me. Did you know that people thought that we were actually beefing?
Guys, so I reposted a story in for the podcast audience if they're not on my Instagram where Chirag was stepping on my shoe and people thought that I was और मैंने लिखा था fashion influencers are the worst of the lot. Yeah. And people thought that I was actually We had a fight. Yeah, they were like कि मैं तो मार देता साले को ये वो अबे bro, लड़ाई में पैर पे पैर थोड़ी रखूंगा मैं. नहीं उनको लगा कि that was like in like influencers that's a way to like show guys, intense people- disrespect. My DMs were very Influencer. funny. My DMs were you're going out of hand with this and starting a new trend because I'm doing this a lot recently. You're जब भी stepping किसी से on- मिलता हूँ ना, I अच्छा. record it by stepping on their shoe. I think it's fun. There's gonna be one point where one person is not gonna like it. Then Chirag Yeah. self-defense, like Chirag pressing the 30s will finally come in. नहीं मैं बस शक्ल छुपाऊंगा भाई. शक्ल क्यों छुपाएगा? शक्ल पे थोड़ी लगनी चाहिए. कहीं पे ही ओहो, मारो. that है, yeah. तो तू ऐसे कर सकता है ना, वो बॉक्सिंग में ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे करके. हाँ ऐसे वैसे ही तो ये होती भी है ठीक boxing. है. आइडिया. जेक पॉल तेरी माँ जोत दूंगा. मजाक आती है सबको boxing. ऐसे ही देख रहा है. जेक पॉल आजकल क्या फाइट कर रहा है लेकिन. अच्छा ठीक तो हो गया. अब तो लड़ लिया. He has fought a couple of Yeah, people to yeah. actually get I good know, but also people are at still least. hating on him. People are still People are gonna वो भी hate कर ही him. रहा होगा भाई. हाँ easy. People are still saying कि Jake Paul is not legit. Jake Paul is a pussy. वो तो But my logic behind it is, and this is not just my logic, more people have also said this before me, कि बहनचोद, if you're spending millions of dollars on fucking, like not, I don't know if you probably have spent millions of dollars on training, your sole purpose is to train and you're a millionaire who's living in fucking Puerto Rico, isolated from the rest of the world, and you're solely focusing on trying to get better at boxing. How do you not get better at it? Because he has the best trainers, he has the Yeah. best food, Huh. he has the best of everything. So the people who are saying Jake Best Paul is pussy. not a legit boxer are stupid. Because Huh. even legit boxers, only the top 1% of the legit boxers will have the budget to train and isolate the way he is, right? Because he's in Puerto Rico, he's in a remote place, there's not a lot of partying there. And he has the best boxers, and he has the best food, he has the best equipment, he has the best of everything. But you And it's been 4 or 5 years since he's been doing it. yeah, but you're confusing times here. 4-5 years is exactly the thing now. Why people think he's not good like the other ones is because these guys have put in about like what 10 years of time, But the 10 thing to is 12 that years of time. people who They put still in treat him as like someone who just came into boxing. and But exactly. YouTuber and like हाँ, the वो तो backlash he है. gets. But even like for someone who just came, वो किसको टॉमी फ्यूरी से लड़ रहा था ना वो अभी. हाँ. And टॉमी फ्यूरी fucking chickened out भाई. Yeah. टॉमी I फ्यूरी की तो saw फट गई that. गांड भाई. And उसने genuinely बहाना मार के कटा था वो. उसको he could have, if he wanted to, he could have very Who easily. was the little out of shape boxer who went with him? He went with Jake only, no? मतलब? जिसकी picture meme बन गई थी क्योंकि he became so out of shape. Oh, are you talking about the MMA fight? Yeah, the like the MMA MMA fighter, guy who हाँ, was. हाँ. I'm forgetting what his name was. पता नहीं मेरे को भी याद नहीं है. नहीं. I'm forgetting, but he was that dude was he was predominantly a wrestler. Like his main thing when he was in the UFC was wrestling. It was never striking. हाँ. So yeah, that's why they were also like this, that. Anyway, coming back to Chirag. तो Chirag मेरे को ये बता कि तूने वो कब करना शुरू किया? When did क्या? you start posting your outfits on Instagram? Because I want to say this to my audience, guys. Chirag is probably definitely the only fashion influencer that I followed, not out of courtesy, but because I wanted to. So do you follow people out of courtesy? Some people I follow out of courtesy, not Define courtesy. like you meet someone at an event, Yeah. and Okay, it's fair. like mutual. I follow him out of courtesy. Yeah, we're not that good friends. It's like, Yeah, I told him how I found out about him. I used to get so like friends का group होता है ना, boys group. Yeah. उसमें मेरे को ऐसे reel share होती थी. मुटबाज. Yeah. So सारी होती थी, सारी reel share होती थी. And when I met him for the first time, my boys went crazy. They were like, oh, क्या influencer बन गया है तू? ऐसे मिल रहा है. That's so funny. Yeah. कहाँ पे हम लोग अभी मिले थे ना पहली बार at the Fashion Sid week. Titler वाला. That's why I told you कि listen, I'm gonna record something. कुछ बोलो भाई अपना काम करो. तो I feel bad for your kid. Like when you actually have a kid, उसको ये सारी reels मिल पुरानी गई चीजें देखेगा. भाई तू ऐसे कह रहा है? पापा तो मुटबाज थे. ऐसे कह रहा है जैसे मैं लाना रोड्स हूँ भाई. ऐसे क्या पाप कर दिया मैंने? मुटबाज की बातें कर रहा है तो भाई मैं वो वाले जोक्स तब भी क्रैक कर रहा हूँ और मेरा बेटा बचपन से सुनता आएगा मेरे मुंह से. वो इंटरनेट पे नहीं देखेगा. वो भी बड़ा होके मुटबाज बनेगा. स्टार्टिंग में सब बनते हैं भाई. एंड इट्स लाइक इट्स फनी. इट्स स्टिल फनी. आप मुटबाज कब बने? इसके बारे में बात करी है ना हमने किसी पॉडकास्ट पे. हाँ तो you can redo your story. We went into a whole देव के में one देव got के into में- porn story. Yeah, I became a mudbaz
when I was I think Don't Mess with the Zohan या The Dictator देख रहा था. And वो जो उसमें actress है, I don't remember her I name. wouldn't say Some I don't know who, but Spanish. some scene I was like, okay, I feel something, and then something happened. हाँ. मेरे मुटबाजी एंथम में भी जो था वो मैंने सच बोला था कि आओ तुम्हें सुनाओ मुटबाजी की कहानी कैसे शुरू हुई मेरी ये मुट्ठल जवानी एक्सक्लूसिवली मोटिवेशनल स्पीकर की जुबानी सबने बोला मत हिला मैंने कभी भी मना नहीं 12 साल का था मैं बैठ के देख रहा था मूवी पैंट में गया हाथ में आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ ग्रूवी नीचे से फिर निकली रेजन नॉट द काइंड दैट्स यूवी तो ये दिस इज अ ट्रू स्टोरी yeah I was about 12-13 when I was watching a movie and I don't remember such intricate details. bro about it was first. I was like mind blown because मैंने सोचा बैंचोद ये क्या हो रहा है और फिर हो गया समझ रहे हो. Do you remember the first day you met your girlfriend? Yeah. Achha, I thought you would just only remember the fapping the first day and you don't remember the important details. No. और कुछ याद नहीं बस वही याद है उसको पहले. Wait, were you relating were you calling my hand my girlfriend? Like नहीं, he's asking you कि अपनी girlfriend से जब पहली बार मिले थे वो हाँ date हाँ याद of है? course. Date याद है. वो पूरा exact ऐसे time क्या हुआ था ये क्या हुआ था वो I'm सब pretty किस time sure. कहाँ मिले किधर मिले? Pretty sure because मेरे को भाई तू मैं 50 साल का बुड्ढा थोड़ी हूँ कि 25 साल पहले मैं अपनी बीवी को कहाँ मिला था ये तो अभी 1.5 साल पहले की बात है. नहीं मैं कंपेयर कर रहा था कि तेरे को ये वाली कहानी याद है और वो वाली थोड़ी थोड़ी. नहीं मुठ मार लोग कहते हैं ना कि मुठ मारने से मेमोरी वीक हो जाती है लोग ऐसा भी कहते ऐसे हैं. किसने क्या- कहा है क्या भाई बोलते हैं तेरे लोग? को ही कह रहे हैं अबे बस. लोग मेरे को बहुत कुछ कहते हैं कि नहीं मेरे को- ऐसा कुछ नहीं होता मेरे को अभी भी अपनी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स याद है. ये तो मेरे को periodic table याद है. बता दे झूठ बोल रहे हो. मैं झूठ बोल रहा हूँ. नहीं ये मेरे को झूठ 20 बोल रहे तक हो. याद है बस. नहीं मेरे को 20 तक याद है भाई 20 उसको वो याद मैंने है. लॉ ऑफ डिमांड की वो डेफिनेशन रटी थी 12th क्लास में को अभी तक याद है. क्या है बता. Law of demand states that there is an inverse relationship between price of a commodity and quantity demanded. If price falls, quantity demanded rises. Price rises, quantity demanded falls, remaining other factors constant. This was faster than me rapping. I can do hydrogen helium like that. Okay, do it. Do it faster than him. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, chlorine, argon, potassium, calcium. Is that 20? Yeah. देखो मेरे को तो पता नहीं है तो मैं तो समझ नहीं आया. So you can be he is a fashion influencer and a eco teacher. Econ teacher. Eco teacher and Eco I'm a teacher. chemistry teacher. Do you like the term fashion influencer? नहीं. What does Chirag like to be called? I don't know. I like any sort of influencer. I won't prefer myself calling. So I'll like rather stick with the word like creator, someone like that. Yeah. Creator Like is more when the influencer word comes, it becomes very Cringe हो जाता है. cringe. Yeah. Cringe तो लोग हमें बुलाते हैं. तेरा नहीं पता. मेरे को तो बुलाते हैं. मेरे को But तो बुलाते you हैं. know What's how the- everyone it's gets kind of ulta in your head because I feel like influencer is more of a powerful word than a creator. It's a powerful word, but the word has lost its value because Yeah. of who is considered an influencer. Yeah, मैं अपने पेरेंट्स को भी समझाया अभी. क्या- कभी कोई उनसे पूछता ना चिराग क्या कर रहा है कहते हैं इन्फ्लुएंसर. नहीं ऐसे मत बोलो भाई बेइज्जती क्यों करवा रहे हो कि इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ ये सब मत बोलो आप. It's a creator. बोल देना बोल दो कि मैं इंस्टाग्राम इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. मैंने ऐसे वो समझाने की कोशिश करते हैं अगर कोई नहीं समझता बोलते थे मॉडल है. That's way better. That's a simpler way. Very similar ना. But models actually are living the shit life. Of course you're a model now. No, I'm not. You're a model now. I was. You did I was a model before like I started content creation. So this happened, right? Or फिर agency से I dipped because I was like, okay, now that my followers are going up, I don't want to be bound by some contract and somebody fucking because their specialty is not Instagram. exactly not even Instagram. Like अभी भी मैंने इतने टाइम बाद जाके I signed with someone. Like I signed with Monkey after like 130K. No, तो तब Okay, तक मैं isn't it pronounced monkey या monkey? no, it's Monkey. It's monkey. Yeah, it's just Monkey. So I signed with Monkey after like 130K और वो भी मैंने इसीलिए sign किया था because अक्षत के साथ I vibed like very very hard. Yeah, and it gets out of hand too to answer all the mails. Yeah, that too. That now that I think of it now, so I have like zero time to answer mails and shit. Same. Now that I have like more stuff happening as well. I But think it gets really tough. You can't like keep अबे और keep a फिर track कि हर mail and if you leave like one mail then you could potentially you lose could out on potentially money. lose a fucking campaign. Yeah, that's true. But yeah, फिर तो when did you start making content? How long have you been making content for? Okay, so I like made my first reel July last year. July last June year. last year. Yeah. June last year. अभी क्या चल रहा है? Yeah, it's like September आ गया. Okay, so a little over a year back. Yeah.
So your 12. first, you went viral on your first reel? No, it was very slow in the beginning. So like, for like being a Delhi guy, Yeah. you can't, if you like post reels, you'll get like a lot of names calling and shit. हाँ. कि TikToker आ गया, वो आ गया. So फिर like आसपास के लोगों से ना. yeah. हाँ. So when I started, and like for the first 6 months, I didn't go out. Because everybody around you would be everybody like, around me would, shy, yeah. I was pretty shy. Even for potentially when I was starting, Yeah. like it was very difficult in the beginning. Yeah. Like कि यार क्या लोग बोलेंगे, जो बेइज्जती करेंगे, ये करेंगे, चूतिया बोलेंगे, टिकटॉकर बोलेंगे. And for me it was कि यार ठीक है. When I made my first reel, it was very fun. ठीक है. Like you had fun, right? Yeah. Yeah. It was super fun for me, and I was working with my in my dad office back then, and I dropped out of college too. ठीक Like way before that. So when I started doing What this, college were you in? I was in Pearl Academy, like a fashion designing college. Right. Yeah. So I was studying fashion. I always liked fashion. That's pretty But- cool. Like that you were in. I thought Yeah. it was an Instagram thing. No. That So you were like studying I fashion got also. inspired through Right. Instagram or like Pinterest. You can say that, but Huh. like I believe Instagram is all about inspirations. Right. In terms of like क्या मतलब Anything, like it could be fashion, it could be comedy, anything. It's like you mean you get inspired and then you get start inspired by people. Your Then own you type of start content. making your own thing. You get हाँ. you know understand your personal style too in terms of fashion. It was like that. Then like 6 महीने कहीं नहीं गया, बहुत कम हो गया घूमना. फिर like gradually एकदम से blew up होने लग गई चीजें. I still remember I used to post like fashion stuff, okay, like fits or editing and ये सब. starting में I don't think तूने directly reels से शुरू किया था ना. I think you did a lot of photos and stuff नहीं also. I Reels ही started था? with reels, yeah. So like beforehand, even before I started, I had like like 5K followers. हाँ. But उस टाइम पे ऐसे reels में views आते थे 5K, 7K, 10K. Yeah. And I was just doing it for the fun of it, honestly. Yeah. I okay, so like back then I never thought you can actually make a fucking rack of money through this. हाँ. For me it was always fun कि मजा आ रहा है यार, time pass हो रहा है. And like slowly, so like I remember a friend told me कि, and she was an influencer too, ठीक है, she was kind of like, like Instagram famous. She told me, yeah, you're making good shit, but make something that blows up. Like, But- मतलब हाँ. like, मतलब यदि कुछ करना जैसे लड़के करते हैं, like follow a few German TikTokers and shit. I was like going through my Instagram, रात को मैं कहा अरे ये सब करना होता है. वो कौन Nick Kaufman है वो सब. मैं कहा ये सब करना होता है. मैंने करा and 2 रील्स साथ में डाली, blew But up. तूने किया क्या? Like what was मैंने the बस अपनी veins दिखाई. I swear to God, I just like for the first few seconds सिर्फ veins दिखाई and end में से transition आ गया, face आ गया. हाँ. And it hit like 700K views, and that was massive. Like a for me. thirst trap kind of thing. So kind yeah, of a partial trap, thirst trap, yeah. So that was massive for me. I was like, bro, fuck. That's and I fucking grew. funny, yeah. And तेरे because of that 700K से कितने 3-4 फॉलोअर तो बढ़े होंगे कम से कम. so like that month alone, 2 of my reels blew up. Yeah. Both were very similar. एक तो trend था, वो याद है जो age, name ये सब आता था, वो Love Nivan TT का जो song है, वो वाला blew up हो गया and ये blew up हो गया. So I gained like around probably like 8K followers Yeah. in a month. हाँ. And I hit the goal of the year Which was? कि 10K. Right. 10K was the fucking goal back then. हाँ. And when I hit it, I was like, bro, ये तो साल इतनी जल्दी पूरा भी हो नहीं गया. हुआ, हाँ. अभी तो 2-3 महीने रहते हैं, क्या हो रहा है ये? हाँ. Then it was very slow. I hit Jan 1st, I was at 16K when Right. this year started. And now, like probably like what, No, 80. 8 months back, 80 something, yeah. Yeah, 80. You mean 8 months later, na? Like 8 Yeah. months after Jan starting. Now, when you had these 5K and 7K wala that thing Yeah. views on the reels, how many Yeah. followers did you have then? I had probably like 6 to 7K followers. 6 to 7K followers. Yeah. So it was very slow in the beginning. I remember I posted like 10 to 15 reels. I wasn't getting any views on it. हाँ. So like even like like recently my manager sent me a screenshot जो उसने अपनी एजेंसी के पिछले साल भेजा था. हाँ. Like when he found out my profile for the first time, I was at 10.3K followers and नीचे reels के views थे 10K, 8K, 16K. Like bro, एक साल हुआ है, like pretty long way. हाँ. Yeah. The thing with, I feel like content के साथ बहुत exponential होता है भाई, जो भी होता है. Yeah, the journey is always fun. Yeah, I agree.
और ये जो when you had 8 followers, Yeah. that how did you come to that? Because it's not heard of somebody just starting off with 7-8K also. No, he right? said he had 5. Five, 6. इतने तो होते हैं भाई, like नहीं, but that was solely through school and people you knew, mutuals and stuff like that. Yeah. मेरे भी जब मैंने शुरू किया था 5,000 थे। नहीं, तेरे 3,000 थे, मेरे 5,000 थे तब, पर मेरे अबाउट 3,000 ish थे। अबे और वो तो होता है भाई, वो बहनचोद सब लोग एक नंबर के चूते होते हैं कि बाहर जाओ तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, like people are just like subconsciously jealous of the fact that you can put yourself out there and they don't have the takes a lot of fucking confidence to for do sure. the same. So it's like it's quite But now everybody stupid. is trying, regardless. Even people who make fun of you have probably tried Tried, not yeah. posted that shit, but tried and they haven't done Yeah, anything. so now to who makes fun of me now to Yeah. venture Now nobody can. Once you're like successful enough, nobody can, Exactly. like make fun of you. Yeah, मुंह पे। 'cause- हाँ। अपने आप में जो बोलना है बोलो भाई। अबे अपने आप में तो फिर भी at the end of the day I'm still in your head if you're talking about me, so fuck you. But yeah, अबे हाँ, फिर मेरे को ये बता कि तूने like why did you pick on like fashion content in particular? Just because like you found it was just an interest, like you found it fascinating. So like back then I was like ekdam se phase, I was like suddenly evolving my fashion. So earlier I used to wear like skinny jeans or That was everyone. That was right? everyone. नहीं, so like for me that was the change. ठीक है, वो एकदम change हो रहा था and then I thought वो मजा आ रहा था यार चेंज करके। when I ordered my first like oversized t-shirt from H&M, I was like मजा आ रहा है यार, मैं तो फैशन वाला बंदा बन गया। AMK को आज मैं यही तो लग इस रहा था। साल ही हुआ oversized t-shirt. Then वो phase चल ही रहा था evolving का। Then I started Instagram making like reels and shit. I was into sneakers. I was already into sneakers. I You already had a few pairs. Yeah, you had a pretty decent, as far as I remember when I started following you, you had some pretty decent kicks to start off with as well. Yeah. I had like 3-4 expensive sneakers I got on Yeah. retail, bro. देखो, you have the Travis Scotts, right? Nah, You don't. I wish. I wish. तो तेरा वो उल्टा सूश वाला कौन सा है? उल्टा सूश है ही नहीं मेरे पास। नहीं है? आपने उल्टा देखा था क्या? I swear, I thought तेरे पास उल्टा सूश वाला तूने था इतनी कोई। पीली थी, तेरे को सब उल्टा दिख रहा था। नहीं, चिराग सीधा था। अबे, and I remember I started following him and I still really like the Yeezys, they're the foam runners, right? Yeah, foam runners. Yeah, I always thought the foam runners. Controversial sneaker. Why people don't like that a So lot? like if you wear it out, I think like probably everyone's gonna see. Look at the Be shoe. confused. And some of अब कोई बड़े से देखोगे तो बड़ा बोलेगा क्या पहना हुआ है बच्चा आपने। Yeah. And कोई अपने जितना होगा समझ जाएगा ये तो साले ने Adidas पहना हुआ है। No, but I think the foam runners look pretty sick, and I think they look Yeah, pretty I remember comfortable. I was wearing it to the mall the other day and पीछे से एक आवाज आई, कोई मजाक उड़ा रहा था भाई इसने क्या पहना हुआ है, and दूसरा बोलता साले उसने Adidas पहना हुआ है। ऐसे बोला था। इतना बड़ा जूता उसके मुंह पे मारता है ना, उसका लगता है। तूने घूम के नहीं बोला कि क्या भोसड़ी के? मेरे को ना अभी मैं उसके लिए गया था, माई स्कूल वाज हैविंग द, जहाँ मेरी हैमस्ट्रिंग फटी थी, जहाँ दिव्यन भी गया था, शाउट आउट टू दिव्यन। अभी Illumina game. हाँ, एल्यूमिनाई दिव्यन खुश। एल्यूमिनाई गेम के लिए गया हुआ था मैं, तो वहाँ पे मैं और दिव्यन गए हुए थे, तो मेरी हैमस्ट्रिंग फट गई, मैं कोर्ट से ना उतर गया और सब लोग खेल रहे हैं, आई एम लाइक ट्राइंग टू लीव, तो ऑडियंस में एक बच्चा बोलता है इसकी बॉटल देख कितनी बड़ी है। मैंने कहा भोसड़ी के तेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी बॉटल कितनी बड़ी है? वो मैं बड़ा वाला मग लेके जा रहा था, मैमथ मग टाइप बॉटल लेके जा रहा था, कह रहा देख इसकी बॉटल कितनी बड़ी है। मैंने कहा ब्रो आई एम ट्राइंग टू स्टे हाइड्रेटेड। लाइक मेरे को बच्चे ट्रोल करते हैं, फाइंड इट फनी, क्योंकि साइड में भी बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि ओनली नैटीज ऑन कोट, ओनली नैटीज ऑन कोट। मैंने कहा भोसड़ी के इतना पतला हो रखा हूं, आई एम एज आउट ऑफ शेप एज आई गेट, और तू मेरे को अब भी वो हाफ नैटी बुला रहा है। तो दिव्यन बता रहा था कि वेंट टू द स्कूल, उधर भाई इतने फैन है लोग अनमोल के, छोटे छोटे बच्चे आके अपने माथे पे साइन करवा रहे। नहीं वो तो ठीक है, बट बच्चे कहीं ट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा बहनचो देखियो भाई आजकल कितनी ऑडेसिटी हो गई है बच्चों की। भाई मेरे को मेरे टाइम पे अगर मैं 12वीं क्या कॉलेज स्कूल से निकले हुए कितने 4 साल हो गए हमें। हाँ 5 साल 4-5 साल 5 साल 2 on top of graduating bro. 2018 so 22 so 4.5 years. 18 we graduated like start. Yeah, so we're fucking a 22-year-old is coming to school और मेरे को 17 साल का बच्चा बहनचोद वहाँ मेरे को ट्रैश टॉक करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरी टाइम पे होता जब हम लोग बच्चे थे बहनचोद तेरी स्कूल में या मेरी स्कूल में भी तो उठा के ले जाता भाई, वो तो स्कूल के बाहर ले जाता। नहीं पर अब टाइम डिफरेंट ना, अब थोड़ी ये सब होता है। वोक हो गए हैं बहनचोद आजकल बच्चे। भाई बताओ आजकल बच्चों में बकचोदी आ गई है, बच्चे भी मुट्ठल बन गए। वोक नहीं है भाई वो, उसको मैं बकचोदी कहूँगा। मैं भी स्कूल गया पीछे after kind of like 2-3 years since I got like Instagram famous. Yeah. I went to the school, very overwhelming, like very fucking teachers ने देखा
क्या ये पर्ल नेकलेस लड़कियों का पहनकर आए हो, ऐसा बोला मेरे को. लेकिन बच्चे छोटे छोटे भाई, लड़कियां, एक छोटी सी लड़कियां इतनी हाइट की, भैया कैन आई टच यू. सीरियसली भाई क्या कर रही है यार, ऐसे थोड़ी पूछेगी. टच यू बोल रही थी. भाई बहुत छोटी, बहुत क्यूट सी लड़की थी. मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच. Cute in guys, Chirag means cute in a non-attractive sense. Yeah. He's not Michael Jackson yet. मेरा तो बहुत मजा आ गया. मैंने सबको फोन करके बताया कि भाई ऐसा हुआ है, मैं मेरे तो सब- फेमस सब- हूँ सबसे touch सालो, करवाया. मैं तो फेमस हूँ, तुम अपनी गांड में रहो बोकाडोना जाके. हाँ, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो स्कूल मैं हर दिन स्कूल आऊंगा. हाँ भाई तुम सालो पार्टी करो, अभी भी क्लबिंग जाओ, दारू पियो, मैं तो फेमस हूँ अब. That's the right way to process that emotion. अबे हाँ, but मैं तेरे से अब यही पूछने वाला था कि when did you start going like okay shit, now people are starting to like recognize me. When Yeah, was that first moment for you? Okay, the first time someone you like पूरा एकदम पहचान लिया ना के मिला. हाँ. I went to watch a movie with और ये 2 friends. कितने followers पे था? Probably around like 20ish. Okay. Yeah. हाँ 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 yeah. I went to watch a movie with 2 of my friends. PVR, I guess वो Promenade Mall में जो है. हाँ हाँ हाँ. I was मूवी के बाहर, वो स्क्रीन के बाहर नहीं खड़े होते, हॉल के अंदर ही. ठीक है, हॉल के प्रेमिसेस के अंदर ही, स्क्रीन के बाहर. आई वाज वेटिंग, क्यू चल रही थी, वो बंद हुआ हुआ था गेट. एकदम से पीछे से बंदा आया, ये चिराग खन्ना राइट. हाँ, माय फ्रेंड्स स्टार्ट लाफिंग. हाँ. ठीक है, दे स्टार्ट लाफिंग, हंसते हुए कह रहे हैं ओ चिराग सर, एंड मजाक बकचोदी करके अंदर चले गए. हाँ. मैं बाहर खड़ा रहा, उससे बात करी 5-10 मिनट में. कहा, सही है. अंदर क्या, मैं कहा बहन के लोड़ो, बेइज्जती कर रहे थे. तुम्हें आगे कोई बोलता है ऐसे? फिर क्या उन्होंने क्या तुम बोला? बैठ के पॉपकॉर्न खाओ सालो, तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं है. ये चिराग सबको यही बोलता है, तुम हाँ, पॉपकॉर्न खाओ, तुम जाके क्लबिंग बोका जाओ. हाँ, क्लबिंग जाओ. मैं देखो उनको ना बहुत मजा आता है ऐसे, बट ऑफ कोर्स हार्मलेस. माय बॉयज दे माय बिचेस, बट सही है टाइम पास. जब तक दोस्त सही है ना, तब तक, जब तक तुम्हारा सर्कल अच्छा है, तब तक लाइफ इज वे मोर. जब तक दोस्त सही है, फेमस ज्यादा होने के बाद चेंज फ्रेंड्स. नहीं. मजाक कर रहा हूँ. You can only hang out with always MBs. know हाँ, एम के मेरा पोस्ट फेम फ्रेंड है. पहले मैं फेम 100K के बाद मैंने सारे सब अनफॉलो कर दिए, सब कुछ रिस्टार्ट किया. मैं यहाँ पर एक्चुअली लाइट वाइट ठीक करने आया था. एम के पहले बस, हाँ, एम के पहले बस इधर उधर दिखता था मेरे को. फिर मैंने कहा अब मैं फेमस हूँ, अब तू मेरा दोस्त है. मजाक कर रहा हूँ. I had like 3 friends before, I have 3 friends now. और फिर मैं Content didn't change anything. I had 3 friends before and then I started a podcast with the same 3 friends. एम के और केशव. नहीं, all my friends are like 6-7 years पहले से friends. All my friends All are of them. dead. कोई भी नया नहीं है. Dead. वो गाने की रेफरेंस मारा था. अबे हाँ, तो नया तो भाई, मतलब I would consider you to be a friend. Who I would say Kush is a friend. Yeah. I would say like I have like content friends who are sort of friends, but Yeah. some of them I would say I'm tight with. Some of them I'm tight with, but Yeah, I'm pretty tight with you, San, Yeah. Kush, of course. It's like you see them on Instagram, yeah. but when you finally meet them, if you get a good vibe out of it, then Yeah, exactly. Yeah. Then they're a Exactly. That's what I also think. Like some people I meet and I'm like, okay, they're actually fun to chill with. Yeah. क्योंकि मैं ना पहले बोलता था कि भैंचोद इंस्टाग्राम पे अगर कुछ हो गया, जिस पे भी कुछ हो गया, तो मैं ऐसे नहीं होगा कि, क्योंकि मैं ना इनको देखता था, कई लोगों को I would see, I don't want to name them, and I would see that they only hang out with their internet friends, and I would be like, this is so fucking weird, right? Like this is माँ की honestly चोट- fucking weird. कितना ड्रामा है उनकी लाइफ में, पता है? बहुत ड्रामा. हाँ, वही कि मतलब तुम लोग भाई अपने इंटरनेट के दोस्तों के साथ ही हैंग आउट कर रहे हो और सबको एक ही चीज से You फर्क should पड़ता है. always know the real ones, right? या for sure. वो तो है. बट मेरे को ये बता, तू मेरे को अपनी स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बता. School life के बारे में. What, Okay. कि So- चिराग खन्ना कैसा बच्चा था? चिराग खन्ना गंदा बच्चा था? नहीं. So okay. Wait, so you're 21 now, right? Yeah. No, I'm you're 21. You're 21. I thought you were 20. You're Divyan's age, no? Nah, Divyan. Divyan से 1 साल You're बड़ा है. younger. Yeah, I'm 21. Okay. School life was good in a way. So like till 10th grade, I was kind of bullied. ठीक है. Yeah. For? Kind of. Yeah, कि that's- sometimes I got slapped. School में. नहीं, but क्यों? क्यों बोली था? No fucking reason. Like it's how it is. Yeah. Did you have any weird characteristic that people नहीं, bullied you for? कि मोटा था या? नहीं, I won't say I had like a weird characteristic on my fucking body, but ठीक है, it was like you see the most gullible one and you bully them. अच्छा, okay. It was like that. Yeah. I had a few friends, like 4-5 friends who I'm still friends with. Yeah. उस time पे, yeah, that was it. And like I remember 10th class में I got like slapped once. ठीक है, and it was like a group of people. Senior, Like, junior? नहीं, Same age. Your grade, okay. Yeah. चलो ठीक है भाई, I think surrounded by like 6-7 people and I got slapped. हाँ.
ठीक है, I couldn't do anything. I was a fat chubby outnumbered. kid. Yeah, I was outnumbered. I was a fat chubby kid. Even though like a few friends who were with me, they like kind of helped me. हाँ. They did the max they could. एक मेरे friend के तो सारे पिंपल फट गए थे यार बेचारे के. फिर And बस उसके बाद घर गया. I was like हुआ क्या है bro? And you don't actually realize when someone's bullying you, they'll have fun, but they won't realize कि दूसरे बंदे पे क्या असर आया, right? पर ये मजे में थप्पड़ मार दिया उसने को, नो रीजन बिहाइंड इट. Like nothing particular. I like don't remember it very vividly. It was kind of like कि कुछ क्या मैंने कुछ किसी पे पैर पे स्टेप कर दिया था ऐसा कुछ, I got slapped. थप्पड़ मार दिया. गंदे बच्चे हैं भाई. It was like that, bro. बहुत गंदे बच्चे. तू भी यही करता भाई. नहीं साले, मैं अभी आता हूँ. I don't want to interrupt your story. हाँ. Okay, then I like took me a while, but then I was like, bro, I need to fucking change this. I was the fat chubby kid. Yeah. Like nicknames वगैरह भी थे ऐसे. चीकू बोलते थे, बताया ना. पर ये तो प्यार से नहीं बुला रहे थे. प्यार से बुला रहे थे, but गाली चीकू बोलते थे. उस टाइम पे लगता था कि क्या बोल रहे हैं, जो नाम चिराग है मेरा, चीकू क्या बोल रहे हैं, चूतिया साले. फिर like कि चलो यार अब जिम वगैरह. I was in 10th grade. It was like tough to convince my parents कि 10th grade में जिम जाना है. But then I started. I was like कि bro fuck that. मैं तो बस बॉडी बनानी है अब. बॉडी बनानी है बस. So 2 साल लगे, बॉडी बन गई. 11th grade I was I start getting kind of fame, kind of कि people start like recognizing me. This is Chirag. वो senior crush नहीं होते बच्चों के, एक 6th grade की लड़कियाँ होती है, वो यार 11th grade का लड़का कितना क्यूट है. हाँ. तो वो 11th 12th में जाके मैं वो बन गया. हाँ. ठीक है, वो बॉडी बन गई स्कूल में, मतलब कुछ एकदम सारी शर्टें टाइट हो गई. फिर इट वाज गुड. फिर 12th grade ऐसी बहुत अच्छी निकली. फिर बढ़िया like फ्रेंड्स भी और सब चिल, कोई Being पंगा like the नहीं ले popular रहा. kid in school, फिर कोई पंगा नहीं ले रहा सब. फिर स्कूल खत्म. आई वाज लाइक कि अब तो भाई क्या हो गया ये, अब तो स्कूल तक ही सोचा था मैंने, मजा आ रहा है लाइफ में. स्कूल के बाद तो कुछ बचा ही नहीं भाई. क्या करूँ अब, कॉलेज जाऊँ, कॉलेज में कोई जानता नहीं होगा. फिर गॉट इन कॉलेज 1 साल बाद, एंड वो गोवा चले गए स्कूल के बाद. वो ग्रैड ट्रिप भी इंजॉय कर ली. उसके बाद था कि भाई अब क्या करना बॉडी का. अब तो बन गई बॉडी जितनी बननी थी, भाड़ में जाए भैंस. अब How jacked were you at this point? Like I was more jacked than you are right now? yeah. I was pretty decent. Like, how much 10% I would say. How much were you weighing? I was weighing somewhere like 68 kgs and around 10%. Abhi I'm 66 something. Okay. I don't know. उसके बाद मैंने कहा भाई अब तो भाई क्या बॉडी बनेगी, भैंचोद. गोवा हो गया, फोटो खिंचवा ली सनलाइट में अच्छी खासी बॉडी के साथ. अब तो भाड़ में जाए. फिर जिम छोड़ दिया मैंने. 1 साल के अराउंड में बिल्कुल जिम नहीं गया. I got like fat and shit. How? ये क्या ये? I gained That's like the first time I've ever heard someone be like कि गोवा हो गया, स्कूल हो गया, अब क्या बहन अब तो घर ही बैठना है वहाँ की. अब क्या भाई, अब कॉलेज खत्म. हाँ, लाइफ खत्म, सब हो गया. I'm dead. 25 fucking kgs. I You remember. gained 25 kgs. 25 kg. That's like about 50-60 pounds. If I show you my older pictures ना कॉलेज फर्स्ट ईयर की, तो आप बोलो क्या भैंचोद क्या बन गया था तू इतना. फिर तो पहचाना नहीं जा रहा. फिर कोविड लॉकडाउन हो गया. पहले लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ के 6 महीने में लूज करा वेट. वो टाइम था ऐसा, वो एकदम से रियलाइजेशन कि भाई. This was when you were also getting into content. This was way before. Second lockdown में हुआ था. Second lockdown में content शुरू हुआ था. First lockdown में like got this realization कि भाई क्या लगता था मैं यार. उस टाइम पे ना वो रॉकी की सारी सीरीज How the fuck did you go that far before realizing that? Because I'm like right now I would say I'm fairly far away from my in shape as well. Like I wouldn't be. I'm not very overweight right now, but like I don't look good at all. And every single day I look into the mirror. I saw your earlier pictures, bhai. You were massive. But now I wasn't like massive, but pehle I was like big in like a fat way. Now I was like, so I used to weigh around 86, 87, 85, 86 in school. Then I got fat. I went up to like 87, 88. Like that was the heaviest. Then I cut down to like 78. And then at my leanest was first lockdown. I was around 76. And I was like extremely shredded. Like when I say extremely shredded, like veins on my legs and shit. My best shape was probably 1 year back, abhi se. I was weighing 63 kgs. I was super ripped. Strength beat was at the maximum peak pe. You were stronger when you were leaner? Yeah.
That's kind of surprising. Because उस time ज़्यादा discipline होगा ना? Discipline, but like like my workout schedule is very unconventional. It's not like most people. What is it? It's not like कि मेरे को 6 दिन workout करना है. तो तू क्या I करता work out thrice a week. है? That's alternate days. Yeah, alternate days since probably like 2 years. ठीक है. 3 बार हफ्ते में. Very decent. I get more time out of the gym as well. I can actually fucking like enjoy too. हाँ. कोई burden नहीं है कि साला रोज gym जाना ही जाना है. हाँ. Right? And yeah, I'm eating somewhere like 2000 calories and people usually ask me कि भाई तू diet तो बता. तेरा बाइसेप तो अच्छा लग रहा है भाई 3 दिन वर्कआउट करने के लिए. Thank you. हाँ नहीं तेरा ट्राइसेप भी अच्छा लग रहा था. ये एमके को एक बार फ्लेक्स करके दिखाइयो. नहीं वो ऐसे कुर्सी पे प्रेस करके दिखा. Doesn't that actually look fucking nice? Like that's a very defined, fairly low body fat. Bro, because it honestly works. पहले मैं भी 6 दिन वर्कआउट करता था. जब मैं 3 दिन पे शिफ्ट करा पहले सोचा था क्या कर रहा हूँ भाई, इतना रेस्ट थोड़ी कोई लेता है. बट सही चेंजेस आए, स्ट्रेंथ बढ़ी. बट है क्या स्प्लिट है क्या? वही पुश पुल लेग्स पर 3 दिन. इट्स नॉट लाइक दैट. ये सब भी नहीं है. पुश पुल लेग्स भी नहीं है. फिर बता मेरे को एक्सप्लेन कर. बेसिकली अरे लो ना भाई. अबे नहीं ये क्या मतलब सबके लिए लेकर आया हूँ मैं. ये कौन सा है? पिंक लेमन ऑरेंज आइस. ओके. हाँ बता. सो हाँ स्प्लिट कह रहे हो ना. इट्स वेरी अनकन्वेंशनल. इट्स नॉट लाइक कि कुछ पुश पुल टाइप्स है. लाइक वर्कआउट ए आई एम ट्रेनिंग shoulders, back and rear delts. How many exercises? 1 or 2 max. Each part? Yeah, my work is like 45 minutes. So like back की 2 हो गई. Back की 1. बता मेरे को क्या back की है. Okay, first I start with अभी जो recently चल रहा है. First I start with what do you call them? Dumbbell shoulder presses. अच्छा shoulder. Oh, maximum weight and low reps, very low volume. 3-4 set but maximum 3-4 set of like 5-6 rep. Yeah. कितना मारता है? First set heaviest होता है मेरा. Which is? RPT. It is 35 each hand for 5 reps. For your body weight, that's a very impressive amount. For my body weight, it's very impressive. No, 35 on shoulders is very impressive, period. And for your body weight, it's very, very impressive. Yeah. My shoulders are strong, my back is strong, my chest is एकदम चिपटी हुई है साली, बढ़ती ही नहीं है. But ठीक है यार, क्या I like that. I can give you a couple of titty tips. Titty tips? Bench कितना करता है तू? Bench is 40 kgs. I do dumbbells. I don't use the rod wala. 40 kgs? Yeah, 40 kgs both. So तू करता क्या है? Do you do incline, flat? Incline only. Start doing a bunch of dips. I do dips as well. So are you doing weighted dips? Yeah. Are you doing decline bench? No. For chest I do 2 exercises: incline dumbbell presses and weighted dips. For back I do 1 exercise a week, which is weighted chin-ups. And that's it. I don't use it's very unconventional. हाँ. वैसे lat pull down वगैरह से मशीनों में नहीं बैठता. हाँ. नहीं but weighted pull-ups ना. Yeah. Weighted pull-ups is the best exercise you can do for your back and for your arms. For your biceps, it's really good. Yeah, I don't train my biceps and triceps at all. At all. Pretty interesting. So you just doing all compounds and he's doing also. He's not doing any machine, right? Yeah. So that's He's gonna there's a strike lot of each balance muscle work anyways, and stuff. Yeah. So it like RPT, what RPT is, reverse pyramid. training, So I do that since 2 years. That's why my strength is like gaining. Right. Because I focus on the fucking strength part. I don't focus on the isolation part. Ki bhai No, but reverse pyramid is actually not focusing on the strength part so much, in my opinion. It is. Not really though. So okay, if you do the normal वाला जो होता है, बस जो normal pyramid होता है कि you're doing the. For me, strength training is when I'm not doing pyramid, like I'm doing a static set. Okay. So like because that's where most Just people 5x5. Okay. Yeah, like 5x5s. Like I've been training since I was like I started working out when I was like 14, but I've been doing serious strength training since I was like 16, 17. Okay. So by the time I was 18, I was already deadlifting like 200 kgs. Like I hit my first 190. 200 kgs deadlift. But that's my max. I've never gone over 202. Hey, that's pretty impressive. But not like for. Hey, you should flex that more, भाई. लड़कियाँ Not on the. So किलो उठाता है ये. अबे नहीं मैं अब तो now I can do 180. Like if I walk into the gym right now, I'll probably do 160 max. और फिर से तेरी टांग टूट जाएगी. नहीं टांग तो नहीं टूटेगी डेडलिफ्ट से. डालेगा भाई तू. अच्छा नहीं अभी तो टांग टूटी हुई. If I walk into the gym literally with an injured hamstring, obviously then तो I'll get hurt. But I'm saying if I walk into the gym while I'm training,
while I'm not training the deadlift, I can always do 160. But You must be really good in bed. उतना मेरा base तो बना हुआ है. I'm really good in bed. उतना मेरा base बना हुआ है. Not humble at all. अबे क्यों भाई? I have a girlfriend. It's not like I'm flexing it to other people. I'm just saying who have like the person who's with I'm pretty good in bed. the person who's with me is having a good time. That's what Even- she said. No, that's what I say. That's what they always say. That's कुछ पता नहीं You were सच good. कितना है. That's You're amazing. for 5 minutes. But I have a small penis. ठीक है. What's your foot size? My foot size, it's a 7. Only a 7. I'm kidding. It's a 10 and a half, which is not So 10 and a half. Good for you, man. Good for you. UK 10 and a half. UK 10 and a half. So US 11 and a half. Good for you. Mine is US 10. Mine is UK 8. Oh, Chirag needs to be on the pod. Chirag episode ये host कर रहा है My guys. thickness, is the only one at the thickness makes up for it. जूतों की बात हो रही है भाई. जूतों की thickness. How wide is your foot? इसका wide इसका ज़्यादा बड़ा है. Makes up for it. UK 8 है तो कोई नहीं thick है. हाँ सही है. ये जूतों में भी ये फर्क जूतों पड़ता की है. बात ही हो रही है ना. हाँ. यहाँ पे Family friendly. penis is a foot only. She finishes it. अबे यार ज़्यादा मैंने कॉफी लेके और पी लिया भाई. I'm tweaking a bit. सारी monster गिर गई यार. कोई नहीं. It's your t-shirt, bro. That's fine. It's your t-shirt का क्या मतलब? मेरे पास Our t-shirt now. और पास will wear it today. मैं कह रहा था चिराग आएंगे इसके सारे कपड़े मार लेंगे. हाँ हम कह रहे ये थे शर्ट अभी तक उन्होंने मेरे को पीछे भेजा है. जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना मेरे से शर्ट पहनने के लिए क्योंकि इनको एंट्री नहीं मिल रही थी टैंक टॉप. भाई सोच मेरे को मना कर दिया भाई वहाँ पे भैंचोद में. You gave him a shirt. ऑब्वियसली I चिराग had ने extra clothes, ठीक है. तो ये अंदर गुस्से से कह रहे नहीं सर आप बहुत गरीब लग रहे हो टैंक टॉप में अलाउड नहीं है. What to tank top में जा रहा था. अबे मैं इस घर से नहीं. I went to model, so I was in like pants and a fucking black tank top and not the string one, like a normal sort of a regular, not I that. just remember him saying सर आप बहुत गरीब लग रहे हो. हाँ अबे हाँ कह रहा है कि यहाँ पे तो अभी सिद्धार्थ टाइटलर है ये है वो है. मैंने कहा भोसड़ी के अभी मैं लिटरली वहीं से आ रहा हूँ भाई उसी इवेंट से आ रहा हूँ. तुम मेरे को कह रहे हो भैंचोद मैं यहाँ घुस नहीं सकता. फिर वो कह रहे नहीं हो पाएगा. पर फिर आई अंडरस्टूड. ऐसा करूंगा रिस्पेक्ट. और फिर चिराग ने मेरे को शर्ट दी मैंने मार ली. वही करता भाई कोई भी कपड़े वापस नहीं देता. CBSE का हूँ भाई मैं. बचपन में भाई मैं बास्केटबॉल टीम में था. कितना फॉर्मल है भाई. कितना मेरे को बंदे का टेक्स्ट आया है उसी दिन की ब्रो तेरी शर्ट तो मैंने ही रख ली. फिर कह रहे हैं जिन का हिसाब कितना हुआ क्योंकि मैंने पे करा था. अबे यार उस दिन अब बताओ. रिलैक्स. अबे उस दिन एक्चुअली में ये हुआ था. ठीक है हम लोग गए वहाँ पे और फिर हमारा एक और वहाँ पे बंदा बोलता कि अबे ड्रिंक्स तो ऑन द हाउस है. सिद्धार्थ पे है ड्रिंक्स. वो इतना गंदा चूतिया लाइफ में नहीं कटा. हाँ भाई कह रहे ड्रिंक्स तो ऑन द हाउस है. ड्रिंक्स सिद्धार्थ पे है. ही इज केप्ट एन आफ्टर पार्टी. तो हमने भी कहा कि कुछ कह रहा है एक बियर दे दे. मैंने कहा तू एक जिन एंड टॉनिक दे दे. सबने ड्रिंक ले एक सब कुछ ले ली. मैंने भी जाके बोला कि भैया एक डाइट कोक तो वैसे दिख रहा है डाइट कोक किस तरह से रहा है. हाँ भाई डाइट कोक. और फिर वो डाइट कोक भी ले ली. वो तब डाइट कोक तो फॉर्मेलिटी वाली होती है भाई कि कुछ पी रहे तो आखिरी में तो उसने एकदम से बोला सर आपका टैब कार्ड दे दो. मेरे को लगा डाइट कोक के पैसे ले लेगा. मैंने दिया कार्ड. ठीक है भाई डाइट कोक है 200-250 500 रुपये मैक्स. चलो होटल है भाई क्या हो गया. मैं कार्ड दिया करे इसी में टैप कर दूं सबका. मैं रुक जा भाई रुक जा. क्या बात हो गई. क्या हुआ टैप मतलब क्या है. कह रहा है कि सर ये ऑन द हाउस थोड़ी है आपको पे करना है. मैं सबको देखा सब अपनी दारू पी के एंजॉय कर रहे हैं. भाई फ्री की नहीं है ये जो तुम मजे में पी रहे हो. ये लोग सब आ गए. चलो ठीक है भाई पे कर देते हैं. फिर एक एक करके बिल निकले. 2,000 रुपए की एक ड्रिंक. भाई मेरी जिन एंड टॉनिक एक जिन एंड टॉनिक 2700 की थी. 27 की थी. 2 की थी. 2000 सिर्फ जिन एंड टॉनिक एंड नहीं. हाँ कुछ ऐसे ही था. 2000 की जिन थी और फिर उसने जिन का अलग काटा और टॉनिक का अलग काटा. मैंने कहा ये क्या बकचोदी है भाई. सोच बहन जो जिन का अलग काट रहा है टॉनिक का अलग काट रहा है. You paid for him. नहीं आई पे फॉर एवरीवन बिकॉज़ किसी के पास वॉलेट वगैरह नहीं था. तो सबने हाथों हाथ वो. अबे हमने कहा UPI दे दो. वो कह रहे हैं बहन चो दिए तो ताज है यहाँ हमारे पास UPI नहीं है. मैंने कहा बहन चो ताज वाले हीरो बन रहे कि UPI नहीं है कार्ड ही लेंगे हम तो. बहन चो देखियो फालतू की वो फालतू की बकचोदी. तो फिर उसके बाद हम गए थे आगे एंड वहाँ पे एक जिन पी थी क्योंकि बहुत रश था. तो भाई अगले मेरे को रात को टेक्स्ट कर रहा है भाई कि जिन का हिसाब कितना आएगा भाई. अगले दिन नहीं दैट नाइट ओनली आई वाज लाइक कि हाउ मच जो है वो you want to know the truth तो उसको बता देता वो फिर भी नहीं देता. मैं बताऊँ क्या करता. मैं वो गूगल पे मैसेज लिख देता ₹500. भाई फेल्ड आ गया. अबे नहीं सिर्फ ₹500 मैसेज में लिख देता. भेजता नहीं भाई बैंक बिजी आ रहा है. एंड वो कुछ बोलते हैं ना अंडर ऑपरेशन और सम शिट लाइक दैट. भाई मेरे को याद है मैं अभी आई गॉट अ CA वगैरह ये सारी हैंडल करने के लिए. तो अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि भाई अभी थोड़ा
टाइट रहेगा ऑनलाइन पेमेंट, कैश ले लो जिसको लेना है. टैक्स वैक्स के लिए टैक्स हाँ, वैक्स भरना so है उस तेरे time को. पे कर रहा था. वाज दिस द फर्स्ट ईयर यू वर गोना फाइल इट फॉर Yeah, इनकम टैक्स? yeah. तू पार कर गया ब्रैकेट? Yeah. ये हुई ना बात. इन्फ्लुएंसर मनी बेबी. My parents are fucking proud कि यार 22 paying taxes, 21 Yeah, paying yeah. taxes. हाँ तो करना पड़ेगा. तो उनको भी करो आप जाके अपना काम करो, मैं टैक्स भर रहा हूँ. बोका जाओ. आप दारू वारू पियो, मैं काम कर रहा हूँ. पॉपकॉर्न खाओ. टैक्स भर रहा हूँ मैं. आप बोका जाओ. I'm pretty respectful भाई. Parents के साथ I'm like शरीफ एकदम. फिर तू ऐसे मम्मी भी पापा मैं गाली नहीं देता, सिर्फ ये करवा रहे हैं. वी इन्फ्लुएंस. वैसे भी तो तू शरीफ ही है भाई. कहा तू गंदा लड़का थोड़ी है, बस जूतों पे स्टेप करता है और फिर लोगों को इंटरनेट पे लगता है कि चिराग बहुत सही है गंदा ना. लड़का है. मजा आता है उसमें भी. उसमें अलग फन है, पता है, रात को नींद अच्छी आती है. स्टेप करने के बाद हाँ भाई. especially because how butthurt people get now with their shoes. Like I don't really give a fuck. Like मैंने तो वो एक जूता लिया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिलाया था, वो भी जब मैं कॉस्मो के अवार्ड्स के लिए गया था, तो तब मेरे को बोला था कि थोड़ा मतलब कपड़े वपड़े पहन के लियो. जाओ. तब भी मैं टैंक टॉप ही पहन के गया था. But तब भी फिर tank top, तब मैंने किसने नहीं I just बोला? wore a Blazer. fucking blazer on top and then when the thing got over I just took the blazer off. I'm most comfortable in a tank top. मैंने अपने आप को बताया कि मैं मतलब कुछ भी हो जाए मैं टैंक टॉप ही I'm पहनूंगा. most comfortable without clothes on. That's because तेरा वाइड है ना पैर, इसीलिए. सारे वाइट वाली है. हाँ हम लोग हमारा लेंथ में कम है तो हमें बनियान तो पहननी पड़ती है. थोड़ा तो कुछ छुपे. और वो तो अगर थोड़ी सी लंबी बनियान हो तब भी छुप जाता है क्योंकि छोटा है. But the reason Molly doesn't remove his tank top, he has a third nipple. You have a third nipple. लाइक अ थर्ड आई, जैसे जो नहीं होता एनलाइटेंड लोग होते हैं उनकी थर्ड आंख Have you खुल seen जाती है. Doctor Strange? Which one? Any of them? The multiverse that came out. उसकी लास्ट में आँख खुलती है ना. हाँ. उसका वैसे वो फ्लिकर करता है. मैं my कहाँ third पे nip. placed कहाँ पर है? बीच में बिल्कुल. ओए. यहाँ पे. It's like a Gap between his. it's like a Bermuda Triangle. वहाँ पे कोई भी लड़की जाती है वापस नहीं आती. Never take your tank top off. Never. नहीं इसीलिए मैं अगर उतारता भी हूँ तो बस उसको मैं इतना खींच लेता हूँ. समझ रहे हो? पूरा नहीं. ऐसे करके ऐसे. बीच में बंद कर लेता हूँ उसको. बीच में nipple पकड़ लेता. अबे बीच में ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे तो मैं अंदर खींच लेता हूँ उसको. तो इतना लोअर चेस्ट दिख जाती है और साइड के एब्स थोड़े दिख जाते हैं, बीच का नहीं दिखता. बहुत है ये वाला था. अबे हाँ ऐसे ही मेरी कोई शर्टलेस फोटो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलती, बस अंदर करता हूँ थोड़ा सा. दर्द दबा होता है बस. ये भी सही है. और चिराग मेरे को अब तू ये बता कि व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर चिराग खन्ना. What comes next? मेरे को ये बता, you still enjoying the process of Yeah, creating Instagram I'm still stuff? loving. So for me it's not like quantity. बहुत ज़्यादा post नहीं करूँगा, but How often do you post? I post like twice a week. I try to. And you're growing at that rate. Which is good. Twice a week. Dude, that's a sustainable amount यार, yeah. क्योंकि That's मैंने a जब शुरू sustainable किया था तो मेरा every day था. I used to make 7 reels a week. I did that for about 40-50 days. Now you do twice a day. Then around 40-50 days के बाद I went to twice a day. I started posting twice a day. Yeah. 7 days. 7 days I think did twice a if you day. like post that much, you'll like, Burn out. Yeah, you'll burn out, socially drained out. कुछ Yeah. दिमाग में Socially बचेगा drained, ही or नहीं. you just get bored of it. It feels repetitive. That's what you feel also. That's why the transition's For me happening. it's pretty different. मैं try ऐसे to find करूँगा your ही own नहीं. I won't like try to post every fucking day. I'll try कि जब कर रहा हूँ मजा आ रहा है. If I'm feeling it, I'll shoot something. And I usually shoot when I'm getting ready. Okay. Yeah. So when I'm going out, I know कि मेरे को जाना है बाहर. I'll तो wear उसका like, फिर वीडियो भी निकाल लेता है. Yeah, I do that because it's more real for. Yeah. To be honest. No, but that's a good way to approach it because like मेरा बहनचोद लाइफ में मतलब किसी भी चीज में बैलेंस नहीं है, समझ रहा है? Yeah. अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं उसको एक्सेसिवली कर रहा हूँ. मैं किसी भी चीज में आई कांट हैव अ बैलेंस. लाइक फॉर मी व्हेन कंटेंट स्टार्टेड हैपनिंग एंड आई स्टार्टेड सीइंग द नंबर्स गो अप, मैंने कहा बहनचोद 7 दिन डाल रहा हूँ तो मेरे भाई 5-5 हज़ार बढ़ रहे दिन के. अगर मैं दिन में 2 बार डालने लग गया तो क्या होगा? फिर बहनचोद 10-10 हज़ार बढ़ने लग गए दिन Now के. you need a break. फिर मेरा दिमाग फट गया भाई. मैंने कहा बेटी चोद नहीं, इतने now you no like honestly need a दिमाग break. फट गया in a good way. I was like holy fuck, if it's how is it increasing so fast? And then I started going absolutely ape shit. I was like मेरे को देखना है वो नंबर बढ़ता हुआ. Like I got obsessed with watching Yeah, that number rise. Then eventually I was like okay fuck these, if I keep doing this content then I'll Your kind of number get should boxed in. always be secondary though. No fuck no. For me it's like it's the direct like for me it's like this But is don't a you think you'll get like some kind of anxiety? I because get of it? anxiety all the time because of it. Like I still get anxiety. Like अब मैं, although I don't want to make reels every day, and I don't make reels every day. Although again I was posting almost every day, but Now you do 5 days. no, now I try. I'm trying to do like only when I feel like it.
because now I'm also very very bored of making content. I don't want to make content anymore. I want to do like creative Yeah. stuff. That's why like I'm trying to make like actual rap whatever stuff. whatever works but for you, of course. Yeah, You like should, now, end of the day, you should always have fun. dude, that's so important. That's the only factor. This is the okay, and this is the only reason we are doing this, right? Yeah, Of course. exactly. Paisa to like Yeah. paisa is like a plus नहीं, point of having पैसा fun. is चलो secondary too. मतलब क्यों करना भाई, right? कि if you can earn from anything. Yeah, so we You can could earn just from do a regular job. Any fucking thing. You can do a Exactly. regular job. You can like work at your dad's office or shit if you have like anything else. Yeah. And गल्ले पे जाके बैठ जाओ काम कर लो. Of course you can do that, but this is actually fun. You don't want a normal 9 to 5 life. Yeah, I don't want that. I'm actually scared of it. I'm Yeah, I honestly think scared it's of the fear of it. Fear of the normal life that Yeah, the keeps normal you life. trying to Yeah. achieve your. And once I finally like blew up and like I realized कि bro you can like make money out of it this too. So I was like कि bro ये तो सही है यार. ये तो पता ही नहीं था, इसके तो साइन ही नहीं करा था कभी. Yeah. तो मेरे को था चलो भाई सही है, I'll like make something out of it, because for me it was very important to build something of my own as well. Of course Yeah. I was working with my dad, but वो उसमें वो वाली फील नहीं आती Yeah. जब खुद कुछ Yeah. कुछ करते हो. मेरे को भी वो था, Yeah. बहुत ज्यादा बड़ा chip on my shoulder था. so now like I never like it's been like 2-3 years I've never asked for a single penny from my parents. I really want to like enjoy. If I'm like like earlier I used to spend a lot. ठीक है, I used to like, of course like everyone has been through it कि dad का पैसा use कर रहे हैं, Yeah, family का and then पैसा, you don't really value it. Yeah, you don't Yeah. value it. But once I like finally got serious, I was like now I'm gonna spend less, but I'm gonna spend mine. Yeah. प्रोटीन खरीदना था, पहले खरीदता था 7-8 हज़ार का, और वो बहनचो 1 किलो प्रोटीन हर बार ही like जल्दी खत्म हो जाता है. You just keep buying दो that स्कूप shit. भी ले रहा हूँ. Yeah. अब मैं एक स्कूप कर दिया दिन का, मैं तो पैसे बचा रहा हूँ. I can't afford more. मैं भी अब तक बहुत है. खुद लेता हूँ. तो you like कि अब पैसे आएंगे तब खरीदूंगा types whatever. Like you kind of like start watching your expenses ये तो more. मेरे घर आके खाने लग fun. I honestly like it. जब से ये करना शुरू करना, it became more fun. It adds The like chase became better. it adds like a layer of sort of like values, or I don't know, Yeah. it just adds like a new layer to your Yeah. whole life, which is how do I keep myself afloat? Yeah. Because जब माँ बाप के सहारे पल रहे होते हो, तब तक. टुकड़ों पे पल रहे होते हो, तब तक तो everything is chill. हफ्ते जाके पैसे लेता था यार कि खत्म हो गए लाओ, हाँ, खत्म हो गए लाओ. yeah. It's जाने good. वाला It's a है. good thing because eventually that's gonna happen regardless. Like Yeah. तो that's वो what anxiety happened. तो होती है सबको कि वो जब होगा तब मैं क्या करूँगा. But if you already start off like that, तो फिर वही अब it's like कि I'm 21, right? 21, I'm paying for myself. Yeah. I am capable of like making a living out of me. Very small living at the moment, but I can do that. Yeah, but the point is you start somewhere, na? Yeah. For some people that it's somewhere fun. comes a little too late, and for some people that somewhere never comes. Yeah. Because I'm sure you know people जो अभी तक अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं और पलते रहेंगे बहुत time और वो खुश है, वो अपनी बाप की गाड़ियाँ चला रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं और वो बहुत खुश है. ऑफ फाइट की टी-शर्ट और हाँ, वो शैम्पेन की बोतलें पॉप कर रहे हैं जो हाँ घड़ियों पे जूतों पे. वो मुझे कभी समझ नहीं आया. That's the मेरे को भी most समझ नहीं आया. fucking Delhi thing ever. I've never spent money on clubbing, never. I've spent a little bit, but not like flexing वाला. Maximum I've मैंने तो spent मतलब दारू is- पीने के लिए किया, not to fucking show नहीं. people की. Yeah. ये Maximum वो, yeah. I've spent ever is like 6-7K, and वो भी मेरे को बहुत लगता है क्योंकि यार दारू पीनी नहीं. Yeah. डाइट कोक पीता हूँ, कितनी पी लूंगा कितनी एक रात पी गया में? Diet Coke? 5 डाइट कोक पी लूंगा, बट बिल में तो करना पड़ेगा ना. I don't think it's diet anymore. Yeah? Yeah. इतनी diet coke पी रहे हैं. तो फिर 5 फिर Diet दो- Coke is 2 becomes 2 Coke. Cokes. Yeah, it's 2 नहीं, Coke. मेरे को अभी आई वाज स्पीकिंग टू हिम एज वेल, मेरे को समझ आया कि दारू पीने की जरूरत नहीं है क्लबिंग में. तुम्हें मजा करना है, तुम हाथ में ग्लास पकड़ो. जो मैंने सीखा, आई यूज्ड टू हैव अ ग्लास डाइट कोक के लेकर, ग्लास रख के बस वाइप कर रहा हूँ. तब समझ आया कि भाई हाथ में सिर्फ ग्लास होना जरूरी है. भैंचोद अगर ग्लास में हाथ में ग्लास नहीं होगा, ऐसे खड़ा रहूंगा मैं सीधा. Yeah. मैं तो चिल नहीं कर पाऊंगा. सब लोग नशे में डांस करेंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही हाथ में ग्लास आता है अपने अपना सिर घूमता है. सही है. भाई मेरा तो यार क्लबिंग में why I feel like I need to drink is because I'm like I fucking hate being here. Yeah. The only way I can I could see that. Yeah. दिख रहा The था. only way I can actually partially forget the fact that I'm in the middle of a bunch of people who are
just drinking and dancing. Like I don't like I that either. hate it. Like I honestly prefer if I'm going somewhere as a club के अंदर, तो I'll rather like stand outside Yeah. with all my friends at yeah. a very yeah, exactly. I don't want to be around everyone. Non की बहन चोद- claustrophobic place where you it's can actually wide. talk. I just go there to speak to my friends, chill for a good time. And yeah. I just find it like कि अब मेरा मतलब I'm at a stage in my life where I'm like, if I want to drink, I'd rather take my group of friends and go to a restaurant or a bar which has loud music where I can also drink in an outside setting, but also be able to have food and do that. I don't want to be in a fucking setting where I'm bumping shoulders with 500 people और मेरे को बेंच बाउंसर साला बेइज्जती कर रहा है घुसते टाइम माँ की चूत. चलो अब तो नहीं हो, like उस दिन तो चल फिर भी हो रही थी, but now I go with my girlfriend, so it's not exactly that, but I don't want to form a ring around my girlfriend every time I'm walking and do this and that and think 50 things कि ये बहनचोद मेरे को आँख दिखा रहा है, ये मेरे को वो कर रहा है. It's so I can't handle that crowd. I hate it. I can hate never it. handle the crowd. Every time अब कोई सैटरडे आया तो सबने फोन करा चलो आज जाना है चिराग. मैं बोलूंगा भाई तुम घर आ जाओ, पोकर खेलते हैं आराम से, मस्त गाने चलाता हूँ, पूल में तुम्हें हराता हूँ, पोकर में तुम्हें हराता हूँ, फिर तुम घर चले जाना, ऐसे टाइम पास कर लो आज. हाँ. It's also a fucking money waste also यार. क्या? The clubbing bit. easy. ठीक है यार, पैसे उड़ाने ही है पोकर में, आके हार जाओ, मेरे से क्या दिक्कत है. तो भाई तो वैसे हमने तो बाप का पैसा है साल मेरे को तो कमाने दो. हम तो 3 पत्ती में करते हैं, हम खेलते 500 की 3 पत्ती और Big stakes. big stakes. Big stakes. अभी हमने मैंने तो रिसेंटली खेलना शुरू किया था 3 पत्ती. आई वाजंट बिग इनटू 3 पत्ती. अभी मैंने 2 दिवाली पहले सीखा था ना. 2 दिवाली पहले सीखा था. उसके बाद हम लोग इतने मजे में लेने लग जाते हैं 3 पत्ती में कि हम लोग कम से कम 3-4 महीने तक खेलते रहते दिवाली के बाद हमारा. फिर उसके बाद जाके हम कहते हैं मजा आता है. अबे क्योंकि उस like this was I think Diwali period was the period when I was also not drinking. So I'm like बहनचोद तुम लोग बैठते हो तो दारू नहीं पी रहे, ठीक है, तो चलो मान लो दारू नहीं पी रहे तो तुम लोग मान ले PS5 खेल लिया या NBA खेल लिया, FIFA खेल लिया, या तुमने बास्केटबॉल बाहर खेल लिया. अगर कुछ उनमें से कोई भी चीज़ें नहीं कर रहे तो हम तो बहनचोद पॉडकास्ट में भी बातें करते हैं. अब मैं इस माँ के लोड़े से क्या और बातें करूँ. समझ रहे. तो हम लोग फिर कुछ बकचोदी मेरे घर ही होता है भाई पूरे दिन. तो फिर हम लोग कुछ You don't play poker, right? अबे मेरे को समझ नहीं आई थी. I don't know how to play poker. बहुत मजा आता है. Poker is way better, पता है? I know that's what everyone, all of these people tell me, but मेरे को actually fun thing पता है, it's a gamble. आ गए. हाँ, that's what is this smart. is. Poker is like skill poker is based. That's what I've heard. So I've heard. मैं तो कसिनो गया था जब ऑस्ट्रेलिया गया था. मैं ले गया $150, ठीक है. Okay. तो I started off playing blackjack. चिराग हार गया blackjack. उसको अपनी तरफ ही खींच लेना, पीछे होके बैठना है. देखो, just pull it towards you, like little, the whole thing will just काफी पास है अब. हाँ ठीक है, तो ठीक है. हाँ तो मैं 150 ले गया, 50 पे ड्रॉप हो गया. फिर मैं रूलेट चले गया. Okay. रूलेट पे मैंने रेड ब्लैक ऑल्टरनेट करने लग गया. मैंने डेविड डोब्रिक के में देखा था, वो ऐसे करता था. ठीक है. तो मैंने GTA में करा बस. हाँ, तो मैं पहुंच गया वापस $100. वाचो जब तक घर पहुंचा $20 पॉकेट से गिर गए थे मेरे. वो भी हार गया मैं. ये बड़ा लेट शुरू करा यार. हाँ, 3 पत्ती. हाँ. अबे हाँ, so I was not that Delhi. I was not peak Delhi. Like I was not as like दिल्ली के तो वो होता है ना कि बहन चो दिवाली आ गई, दिवाली ताश शुरू करो. हाँ सॉरी 3 पत्ती ये वो माँ चौथी. और क्या बोलते हैं? Oh, I was gonna say one of the variations. I stopped myself. ये सही है, लेट है यार. बट लेट है थोड़ा. मैं तो ब्लड में ही है गैम्बल. क्यों भाई? मेरी तो घर पे सबको बहुत पसंद है वो आइडिया होता है ताश का. मेरा डैड इज अ फैन. हर दिवाली वो सुबह 6 बजे ताश खेल के आते हैं. मैं तो सुबह 6 बजे. ओ अच्छा. हर दिवाली. Like he means that they play all night and come at 6. I thought सुबह 6 बजे like सुबह 6 बजे आते हैं. His dad is like straight month. Early badminton session नहीं होते वैसे. His dad's waking up early in the morning calling up the boys at 6 a.m. tash. My dad is like 10 p.m. शुरू होती है, सुबह 5-6 a.m. आ रहे हैं, सुबह ऑफिस जा रहे हैं. क्या कर रहे हो भाई? क्या लाइफ है आपकी? मतलब इतना मजा आ रहा है आपको. 2 घंटे सो के तो कभी फंक्शन ना करो. इवन माई दादी प्लेज लॉट ऑफ ताश. उनको भी बहुत पसंद है. मेरे घर में सबको लाइक दिस ब्लड में है ये तो कि इन्होंने गैम्बल करना है, पैसा मजा आएगा उसमें. ठीक है, बट लिमिट है तो सही है. इट्स फन. मेरे को ये बता दैट considering that you like to not drink, how do you pass time? How do I pass time? Like an honest question. Like I bet every social situation your friends are drinking. Yeah. Right? Yeah. Every possible social situation your friends are drinking. Yeah. So like how do you gather, Overcome the peer pressure. not
overcome the peer pressure. Actually, it's fun. You know, like you can judge people pretty openly, and it's actually fun to be the sober one, dropping everyone home and enjoying with their fuck ups. Their Yeah, I blunders. feel that. I see them all the time. मेरे को बहुत मजा आता है कोई fuck up करो. I actually, you know, like even though my friends don't complain ever, कि you don't drink, because even though I don't drink, I'm gonna, you know, like pretend कि I'm like, you know, like vibing with them. I'm gonna like super friendly. उसी टोप में बातें कर रहा हूँ उनके साथ, chill कर रहा हूँ. मतलब उनको ऐसे बीट ही नहीं होती कि यार क्या चूती है साला दारू नहीं पीता. हाँ, sober है. हाँ. But वो तो दारू ना पीने का the point is that the person like the reason people dislike it is because वो बंदा उतनी बकचोदी नहीं कर रहा होता. So I do that ना. I make up for it. Yeah. मैं अपना वो थोड़ा दिल्लीपन बाहर ले आता हूँ फिर कि तुम बस पियो. मैं पिलाता भी बहुत हूँ यार. हाँ, that's also good. I love, you know, getting like, people fucked getting up. people Because fucked then up. it automatically makes Shots being पे sober shots, fun. shots पे मतलब मजा है भाई. क्या 5-6 शॉट पिलाए एक दोस्त को, उसने दारू पी के हंगामा करा. मेरे को तो बहुत मजा आता है. अबे तो हाँ ना, देखने you में. get a fucking show. मैं उसको पिलाते टाइम बोलूंगा मैं तुझे घर भी छोड़ूंगा, तू चाहे लेट जाए यहाँ पे, मैं तेरे को उठा के तेरे बेड पे एकदम रख कर आऊंगा. हाँ. जितनी पीनी है पी, मैं तेरे साथ हूँ. और फिर वो पीता भी है. हाँ, बस तू पीते रहे, रुक मत. मजा नहीं आएगा वरना. So basically how you actually keep yourself entertained in those situations is to make sure your friends excessively drink. हाँ, एंड वो बोलते हैं साले खुद तो डाइट कॉक पकड़ के बैठा हुआ है, हमें पिलाई जा रहा है, सुबह ऑफिस जाना, ये करना है, गांड मार रहा है यहाँ पे. इसमें मजा कैसे आएगा ये बताओ ना. लाइफ क्या है? मेमोरीज. I agree. बनाओ ना फिर. AM के भी मेमोरीज बहुत बनाता है. हमने भी टुगेदर भी हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है अल्कोहल रिलेटेड. जब ये सोबर था बस मेरे को पिला के मेमोरीज बनाता था. हाँ अबे यार, क्योंकि when you're like not drinking then it's like you have to कुछ तो entertainment होनी चाहिए ना. दूसरा अगर कोई भंड हो रहा है तो उसमें मजा आता है. और क्या करता है? Like what do you do for fun? What do I do for fun? Okay. Like because you said you go to the gym alternate days. Yeah. So that's not like, what does your day consist of? How do you fill up your days? Okay, so when I don't have anything to do Yeah. in terms of Instagram and, you know, like that life, कुछ ऐसा नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए, so I'll go to the dad's office. I'll be there the whole day. Just check out what's going on Yeah, at the just office. check out, be in the back end, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, because it's always in backup, right? Yeah. कल को, you know, like Instagram is not sustainable, कभी ban हो गया, like TikTok, right? So होना चाहिए कुछ. तो वो है. I come back home around, you know, like 9ish. So how many days do you end up going to your dad's office? Probably like thrice a week. So you do go to your dad's office at least that much yeah, in a week? at least, Okay. yeah. Thrice a week I go. I come back home around 9:30, 10. And उसके बाद ज़्यादा हिम्मत नहीं होती, to be 9:30, honest. 10 तो is pretty pretty late. yeah. Pretty late. And But it's then, your business, so. Yeah, so उसके बाद I prefer going to gym कि चल आज ही gym चले आता हूँ. 9:30, 10 के बाद तू जिम जाता है? I go around 11. खाली भी होता है उस टाइम पे. Then what time do you sleep? Probably Generally? like 12. So earlier I used to sleep early, like 12:31 I used to sleep. Now I have a pretty fucked up schedule. But I wake up early. I wake up around 8:39. And what time do you sleep? I sleep probably around 2:33. तो तू 3 बजे सो के 9 बजे उठ जाता है? 6 घंटे सोता है? 8 hours कैसे हो गई? 8:30 सो जाता 8:30 हूँ. उठ जाता है. 3 बजे सो के? Yeah. 5.5 घंटे सोता है बस? Since like 2 months. How? But I'm trying to, you know, like make it better. Now I'm sleeping at 12:31. Like, But isn't that like very less sleep? Like right now I slept at like 12:30 yesterday, but I woke up at 8. it's And right enough. now also I feel like I had to have that little coffee liqueur drink because I was like, coffee getting- I'm big coffee enthusiast too, man. Caffeine तो चाहिए. हाँ, like, but do you prefer energy drinks or do you like? I prefer coffee black coffee. all the way. Black coffee. Yeah. I could have served you some nice black coffee. I have like a coffee machine with decent beans and stuff. Expensive coffee. What do you prefer, the powder one or do you like I make Do you it have on a my machine own at home? French press and, you know, Oh, अच्छा. everything. Yeah, fancy. French press? तो मैंने कभी like घर पे ट्राई नहीं किया. घर वाला French press नहीं ट्राई किया. मजा मेरे को आता तो है, डेविड fun ऑफ थोड़ी चॉकलेटी रखती है तभी डेविड ऑफ ही पीता हूँ. नहीं, but वो वाली ना मेरे को I find those too watery. What do you The mixing it with the powder. Yeah. मेरे को वो थोड़ी And watery coffee का लगती है. taste भी is not that good. वो जो beans वाली जो बनती है ना उसमें फिर वो थोड़ा ground coffee. infused सा हो जाता है पानी में. And the process is fun too. पता है वो ground coffee डालो, French 5 मिनट लगते हैं 2 ग्लास बनाने में. press बनाने में. But मजा आता है यार वो
लाइफ है क्या फिर? मेमोरीज। हर चीज में बना रहा है चिराग मेमोरी। हर चीज में बना। सोब्राइटी का यही मजा है भाई। क्या? चिराग इज फकिंग इंस्पायरिंग मी टू क्विट अल्कोहल अगेन। गो सोबर। कल से मौली बस फ्रेंच फ्राइज कर रहा है और खुश हो रहा है बहुत। मेमोरीज। Okay, और सबको बोल रहा are हूँ you like popcorn खा रहे caffeine sensitive? हैं। In terms of In like terms if of I have it, will I sleep, feel yeah, it? yeah. Like my tolerance for caffeine is high, but I would say I'm sensitive to it to the point where I know कि अब कुछ like मेरे को feel हो जाता है कि अब किक इन हो रही है नहीं हो रही है वो। Are you caffeine sensitive? Yeah. Still, That's the fun. How much coffees do you have? No, I drink a hell lot of caffeine, but I don't like have caffeine after 8 p.m. Otherwise I won't 8 sleep. p.m. Yeah, otherwise I won't sleep. भोसड़ी के मैं 5 बजे बंद कर देते हैं। 5 भी नहीं। I prefer not to drink my 2 बजे 3 बजे के बाद I prefer not No, to I have prefer coffee. not to drink after 5 p.m. But 8 is usually my last caffeine But that's drink when I you're really sleeping need at it. 3 ना। Yeah, yeah. तो 8 के बाद वो 4 और फिर 5। हाँ 8 घंटे सोने से 8 घंटे पहले वही वही मैं तो। सोने से 7-8 घंटे पहले तक Same. वो 7-8 घंटे लगता है। What time do you उसको। usually wake up? Do I usually wake up? Yeah. Today I woke up at 8, but otherwise I don't wake up before 9:30, 9, 10. Not early for sure. Yeah. I wake up early. 8:30. I'm a morning person, to be honest. I wake up early. I go for a long walk. Okay. I finish the 10k steps. रोज सुबह only 1 घंटे? सुबह 1 घंटे में I do like 6-7k. तो तू उस टाइम 1 घंटे में कर क्या होता है? You listening to a podcast? Like how do you pass time? during that Usually time? music. I can't like go to a park and walk, and not the treadmill too. I want something fun. I walk around the roads. ठीक है, हर दिन different कुछ route ले लिया, कुछ different गली में घुस गया walk करते हुए सुबह. And just to like look around, मजा आता है, time pass हो जाता है. रैंडम गली में घुस जाता है फिर घर ढूंढने की कोशिश हर करता जगह आज तो मैं ऐसी गलियों में घुस गया अपने घर के आसपास, मेरे को अपने घर के लिए गूगल मैप खोलना पड़ा. हाँ वही तो दैट्स व्हाट यू गो इनटू रैंडम गली जब तक घर वापस पहुंचता है ढूंढते ढूंढते 10,000 हो जाते हैं. तो तू गाने नहीं सुनता? तू गलियों की कलैश सुनता है? गाने सुनता हूँ यार. ईयरफोन लगे होते हैं. यहाँ पर आंटियां लड़ रही है, यहाँ पर गाने चल रहे होते हैं टाइम पास के लिए कि थोड़ा फन भी होए. गाता रहता हूँ आपस में. पॉडकास्ट नहीं सुनता तू? पॉडकास्ट नहीं सुनता. हमारे होते हैं 1 घंटे लंबे. 3 Are you not into podcasts? Like do you not consume that medium? I Do you seen usually hear some. podcasts? नहीं, not really. भाई तेरी जिंदगी बदल जाएगी. If you like walking, Yeah. try listening to whoever you find. My imagination is pretty bad, yeah. If I'm like listening and not watching it. No, but it's not about It's the not fun for imagination bit. It's more like because like it's literally overhearing someone talk. It's just a conversation. Because वो visualize थोड़ी करवा रहे थे को कुछ. Like it's not like a e-book थोड़ी है. E-book में होता है ना कि Yeah. कि ये imagine करो ये हो रहा है वो हो रहा है. So like in an e-book, but in a conversation, तो it's just two people talking, right? Okay. And I'll try a that lot too. of the times the conversations are very insightful. Yeah. Like I'll who try do you that. find the Fascinating. most fascinating and the most influential of you? Like who in your life, who would you say is someone that you kind of like, I'm fascinated by this guy, I look up to this person, like वैसा कोई तो like होगा already ना like celebrity motivation और celebrity के लिए like oh this guy is like a fashion icon or this guy is like a this like do you have anyone who's like भाई तेरा ट्राइसेप मेरे को काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. Sorry भाई. इतना ऐसे मत कर. पानी तो नहीं हो रहे ना. थोड़ा सा हो रहा है. Shit. छुपा लिया. पीछे रख ले. Anyway, coming back to the question. Yeah, honestly, no man. हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कोई भाई? celebrity भी नहीं है. Nobody. I respect everyone. हाँ. सबकी लाइफ में there's different struggles. सबने कुछ ना कुछ करा हुआ है. सब मजा कर रहे हैं. सब like going through a different struggle Yeah. of their own. I respect every that. But I don't know, man. I have no one to look up to. I prefer building something of my own because like inspiration is it's there, but it's not like a particular person I look up to. कि मेरे को ऐसा ही बनना नहीं, but look up to doesn't mean that you want to replicate them. Like I don't want to be like anyone. I don't want like I want Anmol Raina to be his own version of whatever that person is. समझ रहे? Like obviously you can't be like anyone. You can try to copy someone, Honestly, but at the end of the day, your own unique experiences, your own unique maybe thoughts. there would be someone subconsciously. अभी तो ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा, but जैसे मान ले like अगर मैं सोचूं तो like when I was young I would look up to Kobe Bryant. Okay. I was very fascinated. Like I wanted to become an NBA player. So that time I was super fascinated by like Kobe Bryant. Then I was super fascinated by a bunch of YouTubers. Like I used to really like Casey Neistat when I was around 14, 15, 16. I think 15, 16 was when Casey started popping off. So that time I was very fascinated by Casey Neistat. And then I used to really like David Lade in the fitness realm.
then Oh, that guy is massive. yeah, like there's like these little things, right? There are Yeah. these little realms of like, so like you can't be completely look up to one person. That's why you can't be like कि मेरे को पूरा ऐसा बनना है, क्योंकि तेरे को हो सकता है कि उसकी बॉडी पसंद है पर तेरे को इस बंदे का पर्सनालिटी पसंद है, पर्सनालिटी पसंद है, तेरे को इस बंदे की रीड like what he reads you like I take inspiration from everyone. मैं That's what, सबसे but like कुछ if you सीखता हूँ. think I of took someone- inspiration from you as well. in terms of what? In terms of, okay, Left when से I- मुट्ठी मार when रहा I- तू तो देखना इसका पॉडकास्ट देखा वो कर देखा है मैंने ट्राइसेप. फोरआर्म मेरा ठीक है फोरआर्म ठीक है. नहीं तू मैं बताऊँ किस हाथ से मुट्ठी मारता है? बताओ. ढंग से फ्लेक्स कर, ऊपर लाके ऐसे करके ये इस वाले से मारता है. Wrong. झूठ मत बोल. आई थॉट दैट वन. अच्छा देखो उस एंगल से बेटर दिख रहा होगा. मेरे को एक बार फिर से दिखा. देख पता चल गया ना देखो. हाँ. अबे नहीं तू गलत फ्लेक्स कर रहा है इसीलिए नहीं समझ आ रहा. उसको ऊपर कर. Okay. ऊपर कर. अब बताओ. अब ये वाला नीचे है बट यार मेरे को तो अभी भी ये वाला ज्यादा हाँ डिफाइन लग यही है रहा भाई, मैं ब्लफ कर रहा था. देख रहा था कि कितनी ट्रिक चलती है. सही वही है ना. गुड गाय. देख रहा है मेरे को पता था भाई. अबे देख इज अ फकिंग प्रो. भाई अब लोग मिलेंगे ना पॉडकास्ट देखने के बाद, इनसे अपने हाथ छुपा लेंगे कि यही है ना बट कॉल आउट कर देगा कि तू तो इस हाथ से मुट्ठी मारता है. वही है भाई दिख रहा है muscle दिख रहा है. मान गया भाई तेरी बात भाई क्योंकि मैं भी मजाक की बात थोड़ी है. लाइक अभी मेरा मैंने हम्बल कपड़े पहने हुए वरना मेरा भी भैंचो ये वाला अब मेरा तो अब वैसे इक्वल है बट फिर भी You worked on it ना. I did. It took a lot of years and steady mutti and Yeah. here we are. Inspiration. When I met you for the first time, I thought कि you are बकचोद guy. ठीक है, you are for sure, but you're very fucking sweet. I like how Chirag was like कि fuck ये नहीं बोल सकता कि बकचोद नहीं है. नहीं बकचोद है bro. compliment That's why him. I like you know like hanging out with you, but otherwise you're like a pretty nice person. You're pretty sweet. अबे so I like what did you expect me to be like? बोला अरे So, माता यार, fashion नहीं मेरे को यार जब मैंने देखा था ना, नहीं ऐसा नहीं कि लैंग्वेज yeah. गंदी होगी. जब मैंने फर्स्ट टाइम से इंस्टाग्राम वगैरह पे देखता था, आई थॉट कि लाइक बंदा बकचोद है एंड यू नो लाइक Yeah. थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होगा किसी वे में. That's pretty funny. दैट्स द फकिंग ऑपोजिट. मैंने मेरे को That's द फर्स्ट टाइम pretty रिमेंबर तू सबको थैंक यू तक बोल रहा था गेट ओपन करने के लिए एंड यू सो फकिंग स्वीट. आई थॉट कि भाई वो तो मैंने कनाडा में सीखा था कि थैंक यू बोलना होता है. यू नो लाइक stayed with me. Yeah. And that's how I like you know like take small inspiration from everyone. Yeah, जिसमें जो yeah. अच्छा लग रहा है देखता हूँ, नोटिस करता हूँ हर चीज. हाँ वही बट तो तू मेरे को कह रहा है कि there's like नो सेलिब्रिटी No celebrity ना. no like YouTubers जैसे मेरे को डेविड गॉगिन्स से भी do you know who डेविड गॉगिन्स इज? He's like this ultra marathon runner. तो तू जब तू मान ले like उस दिन मैंने तेरे को रात को जब मैसेज किया था कि मेरे को किसी ने ना चिराग के साथ मैंने फोटो डाली थी तो मेरे को किसी रैंडम बंदी का डीएम आया था कि ये तो आपसे ज्यादा गुड लुकिंग है ये वो फिर मैंने चिराग को स्क्रीनशॉट भेजा था कि मेरे को अब नींद नहीं आ रही 4 बज रहे थे उस टाइम और ये भी उठा हुआ था कह रहा मैं रोम कॉम देख रहा हूँ. तो तू हाँ यार, कंटेंट तब तो कौन सी नोट चल रहा था तब. आई वाज वाचिंग वो क्या नाम था कुछ नॉटिंग समथिंग हिल, द नॉटिंग हिल ऐसे करके कोई अच्छा मूवी कौन थी. हु वाज द एक्टर? इट वाज लाइक अ 1999 मूवी जिसमें there's this guy and एक randomly उसके बुक स्टोर के अंदर लाइब्रेरी के शॉप होती है छोटी सी बुक स्टोर होता है एंड एकदम से एक एक्ट्रेस घुस जाती है. लाइक वो एक्ट्रेस like a very famous शो में actress. हाँ, एक्ट्रेस जो लाइक मूवी में एक्ट्रेस yeah, होती है ना. yeah, मेरे को very- लगा तू कह रहा है कि वो नहीं, कैरेक्टर famous- का एक्ट्रेस एक फेमस एक्ट्रेस घुस हाँ, जाती है एंड यू नो लाइक they meet, they vibe, they kiss randomly. है Yeah, तो एक second ये शो after- ये after किस like 3-4 नेटफ्लिक्स पे scenes. था या ये पॉर्नहब पे देख रहा था तू? ये किस लाइब्रेरी में किस कर दिया पहली I'm मीटिंग में? stuck between the shelf. pretty sure Pornhub तब तक तो नहीं चल रहा था उसके बाद. नहीं वो तूने मेरे को नहीं पता ना तू भी तो क्रिएटर है. तूने लगा लिया होगा वीपीएन. हाँ वो तो है. वो तो होना एएमके का मैं Daily VPN. एएमके का यूज करता हूँ. No, एक रात में VPN चला के सोया, अगले दिन मैं उठा, मैंने देखा पिछले 6 घंटे से VPN चल रहा है. रात को कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई क्यों phone नोटिफिकेशन नहीं. VPN के बाद मेरे VPN का कोई फोन नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता. मतलब I don't know. डू यू टर्न ऑन द इनबिल्ट वीपीएन ऑन? नहीं इनबिल्ट नहीं है. Not App है? VPN. Yeah. Not VPN. डेली VPN. पता नहीं फिर मुझे. ये कोई बहुत गंदा फ्री वाला यूज कर रहा है. Yeah. एएमके साले ने सब्सक्रिप्शन ले रखी है भाई. 1 साल की. उसमें मैंने अपने लैपटॉप पे भी ऐड किया है वो. ये कितना कन्वीनियंट है, कोई ऐड नहीं भाई. जब तुम VPN ऑन कर रहे हो तुम्हें पता है तुम्हें बाद में क्रोम खोल के Pornhub लिखना है, ठीक है. हाँ. लेकिन तुम VPN ऑन करके पहले ऐड देखते हो 15 सेकंड की, फिर क्रॉस दबाते हो, फिर VPN दबाते हो, फिर वापस 15 सेकंड की ऐड देखते मेरा हो. नहीं होता ये. तो सही है बंदा भाई आधा मिनट बचा रहा है ब्रो. आधा मिनट बचा रहा है, आधा मिनट ही लास्ट करता है. और रियलिस्टिकली मैंने लिया था क्योंकि नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं ना फिर क्रॉस कंट्री उस पे. हमारा एक दोस्त था वो उसको सिर्फ मुठ मारना पसंद था व्हेन ही वुड रीच अ पर्टिकुलर सीन इन अ मूवी और वो पूरी मूवी देखता था उस सीन तक पहुंचने के लिए.
पर्टिकुलर दोस्त था. कौन दोस्त है भाई ये? अभी Next शिशिर की level बात हवस. शिशिर की बात कर रहा हूँ. मेरी बात हो रही है भाई. तू बोलता था ये. Wasn't शिशिर भी नहीं करता था ये. नहीं, ये No मेरी बात offense, थी. bro. No offense. मैंने तू था. I thought it was शिशिर. I told you the exact story of the number one. Oh fuck! Why did I think it was शिशिर? AM के करता है भाई बंदा. पूरा देखता है, मूवी देखता है, फिर वो सीन पे जाके अपना I लंड बाहर निकालता है. told you I like the effort. तू सोच तब तक वो निकालता भी नहीं है Bro, अपना this छोटा guy into foreplay at the max. मोटी फोर प्ले. मेरे को मजा ही नहीं आता भाई. वो Climax सीधे 2 climax second. scene. Climax 2 second. Foreplay बहुत पसंद है. सतीश रे ने रील बनाई थी ना एक कि 24 मिनट कैसे लास्ट करा जाए, कि उसको पहले सेक्स करना शुरू करो, फिर उसको बोलो गर्मी लग रही है, फिर एसी चलाओ, फिर ये करो, फिर बीच में ये बोलो 24 मिनट यू लास्ट. मेरा तो नहीं भाई, किसी भी प्रोग्रेस कर नहीं पता क्या है ज्यादा. मेरे को तो यही लगता है देखो, if you like last longer, progress in between करते रहो, change कुछ कर. Yeah, like as soon as you're about to finish, you switch positions. Yeah. And between the transition वो and you reset. Yeah. ऐसे ही होता है वो. lasting was never a problem for me. Yeah, neither for me. Like lasting, I'm just saying if I had to last too long, like I can usually last pretty long. Yeah. Unless when I'm hungover, then I tend to not last as long. But of course we have like a small penises, right? So yeah, exactly. we have to The reason we don't last long because there's nothing. we have to make Yeah, up for like it. और वो surface area इतना कम है कि हम stimulate ही नहीं होते ज़्यादा. Can't relate. तो वो time he's wide, he's thick. नहीं, जूतों की बात थी भाई वो. इसका तो दो हाथ से I'm करना still पड़ता है ना. keeping it. ऐसे दो हाथ से, ऐसे नहीं दो हाथ से, ऐसे दो हाथ से करना पड़ता है. I'm still keeping it family friendly. वो ऐसे करके करना पड़ता है. Alternate. Like you're a robot or something. Really fast dancing. Dead. Masturbation. मुट्ठी. Would you have any tips on upcoming fashion and lifestyle influencers? I say just like start making things. Start making. You'll eventually learn out of every reel, everything you make. Every time next reel will be better. And like you have to start at some point. अगर बनना है तो bro शुरू करो, बनाओ, effort डालो, and like by every reel you'll get better. And you get that eye aesthetic की eye आ जाएगी. This is good. True. How would you like? How do you think like you came to what you're not aesthetic in terms of style, but you're aesthetic in terms of shooting? Like, how do you think you arrived to that aesthetic? कि मेरे को ये वाला shot अच्छा लगता है, ये thumbnail, ये वो. Like, I think I had that since the beginning. I always liked, like shooting in natural light, and I like those few things that you always the few wanted things. I think to the few things stay are consistent. very important. If I'm shooting something, you can artificial light, ring light लगा के, I won't feel it. वो तो I feel like वो मेरी girlfriend भी वैसी है कि वो ring light में कभी shoot कुछ I won't feel it's मतलब करा है ये सब भी, but I prefer natural light. जब तक वो एक window है and natural light आ रही है, it's more appealing to me. And I try to like before starting, I try to like put the tripod at different locations, see the lightning, see everything, see the whole background कि कैसा आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है, पंखा फिल्म दिख रहा है. पर तेरे को नहीं लगता वो natural light के चक्कर में, but you're also shooting twice a week, right? So I guess you're less stressed out, क्योंकि मेरी बंदी के साथ क्या होता है, she gets twice super... a week, probably sometimes. I usually shoot like once a week. So that's even less pressure on that one day. Even less Because pressure. my girlfriend gets super stressed out कि वो बहनचोद sunlight नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो बारिश हो गई, अब मैं क्या करूँ, ये वो like समझ रहे हैं? Because with the shooting with natural light के साथ वो बहुत beaty होती है, cloud आ गया बहनचोद, you get ready, you set up the shot, you do everything और cloud आ गया और फिर जा ही नहीं रहा. You get late, कुछ हो गया. और फिर sun goes down. Yeah. I like shoot once a week mostly when I'm going out, when I'm getting ready during the day. रात को जाना है कहीं तो फिर तो वो हट ही गया ना, नेचुरल लाइट ही नहीं मिलेगी, और रिंग लाइट में करूँगा नहीं मैं, कुछ भी हो जाए. I'm trying to like keep it to the natural light, looking better, more aesthetic to me, more appealing to me. And I shoot when I'm going out in what I usually wear. So I shot a reel before coming, and I felt the outfit. I was like, bro, this is good. पहना अच्छा लगा, मैं इसमें बनाऊंगा. So I usually when I'm posting something organic, जो कपड़े दिख रहे हैं वो मैं honestly वो पहनकर बाहर गया हूँ. Right? It's not there for the reel itself. कि सिर्फ reel बनाई उतार के साइड में दिया, कभी लाइफ में नहीं पहनूंगा. Right? And of course like कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तू कितना बेसिक है ब्रो ये.
राइट मेरे को ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं, ऐसे DMs भी आते हैं, बट I was going to come to that. अभी आते हैं उस पे. आई वाज लाइक कि मेरे को लगता था ठीक है भाई, आई डोंट फकिंग केयर टू बी ऑनेस्ट अबाउट द हेट कमेंट्स, because this is what I'm usually wearing, this is what I'm comfortable wearing, right? I feel it more, and everyone doesn't have to be, like extra. The point is it should be good to you, right? Yeah. वो तो खुद को मजा आ रहा है it's all तो about मजा आ रहा है. personal. That's what I'm like trying to promote on my Instagram, ki find your personal style. For me, of course, after 2 years it will be completely different. Yeah. Because fashion is always evolving. Yeah. What you're wearing right now, you won't wear it after 2 years. हाँ. Possibly. Maybe, yeah. Yeah. So after 2 साल बाद कुछ तो different होगा. If you're like evolving, of course, after 2 years, I might be wearing a leather jacket in summers. I don't know. Yeah. अभी मजा आ रहा है पहन के, plain t-shirt पहन के मजा आ रहा है. हाँ है basic, सालों मार चुदा अपनी. Yeah, that's like my approach towards making like like funny content. Like Yeah. I find it funny, so it's funny to me. अब मेरे को लोग कोई कहते हैं, oh my god, mutbazi and all of this stuff is so inappropriate. Yeah. Make Of course. cleaner stuff. Do you only make stuff about sex and inappropriate things? And माँ की चूत मेरे को funny लग रहा है. तो Yeah, मेरे को it लग should रहा be है funny. It should be funny for you. It's only fun to make as long as I myself am laughing while doing that. Like when I'm making some of my rap reels, like I'll genuinely be laughing while I'm like thinking of it, right? I'll be like thinking of it and I'm like, fuck, this is actually funny now. अब मेरे को जब तक हंसी आ रही है तब तक आ रही है भैंचोद, और that's literally just that. कि अगर मेरे को जब तक हंसी आ रही है तो आ रही है. Like it doesn't matter if you're gonna shit on it, because it won't really make a difference. But मेरे को ये बता कि फैशन इन्फ्लुएंसर्स को कैसी हेट मिलती है? कैसे हेट मिलती है? एक तो मैं गैस कर सकता हूँ क्या कि बाप के पैसों से कपड़े खरीद रहा है, ये बैंड कलंडी है, वो ये सब तो ये तो सबसे कॉमन होती होगी. एंड वो रैंडम, जब से थर्स्ट ट्रैप डालना शुरू करा रैंडम चीजें आती है. थर्स्ट ट्रैप पे क्या हेट आती है? मेरे को लड़कों के आते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड मेरे को शेयर कर रही है हाँ कि बहुत सड़ी के चूतिए, क्या पहना हुआ है तूने, चूतिया है तू, एक नंबर का चीजें आती है. How do you know the girlfriend is sharing it? मेरे को थोड़ी वाइब आ जाती है. I just assume it. That's what keeps me happy. कि हाँ इसकी साली की बंदी ने भेजा होगा मेरी प्रोफाइल की कितना गुड लुकिंग है, तभी साला यहाँ पे मरवा रहा है आके. ठीक है ब्रो, एक्चुअली फन व्हेन आई सी द हेट. पहले ना आई नेवर गॉट हेट टिल आई हिट लाइक 20-30 के. जब आना शुरू हुआ ना, सब दोस्तों को फोन आएगा, भाई ट्रोलिंग आ रही है, मजा आ रहा है यार. बहुत मजा आ रहा है. अब जाके समझ आया है कितना फन है बेंचो. इफ यू आर गेटिंग ट्रोल्ड, इफ यू आर गेटिंग हेट, यू एक्चुअली ग्रोइंग. Right. या दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. लाइक आई फील लाइक जब मैं जैसे लाइक जब भी मेरा वो वाला फेज होता है ना, जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जैसे अब मेरे वापस से थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हैं, और जैसे ही वो शुरू होता है ना तो फिर हेट भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली. बिकॉज लाइक जो मेजोरिटी को पसंद आ रहा है वो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आ रहा था. तो मेरे को बहुत सारे लोग कह रहे हैं माँ की चूत रैप रील बंद करिए, वो ऊपर बहन चो, तब मेरे वापस से 1000-2000 फॉलोअर बढ़ रहे हैं हर रोज. तो मैं क्यों like why do I stop it, right? Nah, hate comes along with everything. Whenever somebody sees you're doing well, there's going to be hate. Nobody has 100% positivity through ट्रोल everything, भाई. हेट कम आता है, ट्रोल ज्यादा आते हैं. Trolls is like एज मैं टोट बैग पढ़ रहा हूँ तो लोग लिखेंगे कि भाई झोला पहन के सब्जी खरीदने जा रहा है. मेरे को इतना मजा आया bro. those are pretty funny though. Yeah, pretty fucking funny. झोला तो ये मैं ये टर्म मैं भी यूज नहीं, करूंगा. पर यही पकड़ के भाई. सब्जी खरीदने जा रहा है, क्या बाप के पैसों पे जूते खरीद रहा है, ये सब चीजें आती है. नहीं, but the jhola be these. I like these kind of comments. That's funny. There's thought behind it. Yeah. Funny. I appreciate everyone who's trolling me. Honestly, at this point. Trolling I find funny too. Yeah. Trolling The is hate funny. is just sad. The hate is just mother chutiya kya kar raha hai. Like that's just Galia. hate. That's just And plain that's a hate out of reflection somebody's of heart. that's definitely a reflection of what that person is probably going through in his life. Yeah. कि अगर मेरे को कोई रील पे कमेंट करता है कि fuck you're so annoying, your content is so annoying, and I'm like bro ये what the fuck कि मतलब भाई तू बहन की लोड़ी अपनी लाइफ से इतनी सिक हो गई है कि तू अब किसी के इंस्टाग्राम पर आकर पब्लिकली पोस्ट कर रही है कि मैं इतनी annoy हो रही हूँ. Like you know, like if Do in you usually person block people when they? I never do. Never do. I never. I do that. I try to tell my girlfriend this also, and I don't know if this is like I don't know if this is a positive thing or not, but I try not to. मेरे को अगर हेट कमेंट्स आएगी इवेंचुअली, अगर मान ले मैं कन्विंस हो गया कि रील अच्छी नहीं है, Yeah. एंड आई जेन्युइनली फील कि रील सब पार थी इसीलिए हेट आ रही थी, तो मैं रील हटा दूंगा. वो भी बहुत कम होता है. जैसे आज मैंने हटाई थी क्योंकि आज आई वाजंट सैटिस्फाइड विद द वे इट केम आउट, because I was like, okay, now I want to make it like in this way, not that way. Yeah. So today I removed the reel, even though it wasn't that much hate also, but I was like, I will never delete comments. If it's negative comments, I will never delete it, because I don't want to I don't want to artificially alter the public sentiment. Yeah. If that's what the public sentiment is, then that is the public sentiment. Correct. I hate censoring it. I know it's my platform, I know it's everything, but जो आ रहा है. मैं उसको ना तो किसी को
I'll only block someone if they're like saying some shit about like my girlfriend or something like that, and that is also very rare. अगर तुम if you're not getting personal and talking shit about my family or But you don't post with your girlfriend much. I never do. Never But do. if That's but people the way to do it, people man. still find a way to her or whatever because Yeah, if they do और वैसे ही अगर कुछ आ रहा है कि मतलब वो मेरे मतलब क्या like मेरे को तो एक इतना detailed comment आया था कि तेरा बाप ये like this was a long ass paragraph कि तेरा बाप ये करता है वो भी चूतिया है तू ये करता है तू भी चूतिया है उसने पक्का मेरी किसी गाड़ी की नंबर प्लेट है उससे किसी ने देखा होगा कि कंपनी क्या है ये क्या है वो क्या है तो उसने पूरी रिसर्च करके लंबा सा डीएम भेजा था फिर उसने मेरी ही सेंड दैट डीएम टू माय गर्लफ्रेंड saying that your boyfriend is a loser, his dad is this, that, and left a long. That was one person I blocked. That's the only person I remember blocking. Yeah. Otherwise, I don't block. I don't like to. मतलब अगर तुम लोगों को hate करनी है तो करते रहो क्योंकि मेरी reach बढ़ रही है. तुम comment करते हो मेरे post पे. I feel like there's the people like we were talking about upcoming creators. The reason they lose heart in this is because they can't differentiate between constructive criticism and hate. Yeah. Like hate तो बस you have to feel sad for the person who's hating. Like वो इतना they're going out of the way to type चूतिया मादर चो तू life में कुछ नहीं कर पाएगा. Actually putting the effort. Exactly. Put in a little too much effort. भाई मतलब इतना क्यों वेले हो भाई कि. पर अगर कोई But troll honestly, करता that's just funny. for everyone who wants to like like join this and start making content or something, always look up to hate. If you are getting hate, that You're means doing you're something growing. right. Yeah, that means you're growing. Honestly. People are getting annoyed. Yeah. That's a good thing. And yeah, so do you कोई sort of emotion तो जगा रहे हो तुम लोगों में चाहे वो hate हो जो भी हो कुछ तो जग रहा है ना like कुछ तो है ना तेरे में जो वो react कर रहे हैं. do you usually read all your DMs? For the most part, yeah. Like बीच check तो कर ही लेता हूँ. Do you reply to them as well? I reply to like the overwhelmingly positive one. Like obviously I can't reply to each DM, but if some of them are like exceptionally sweet, and plus I have to keep an eye on my DM because I do a lot of like campaigns. No, not like ad campaigns, like advocating for like dog stuff, right? Like I do a lot of किसी का कुत्ता घूम गया, किसी का ये हो गया, या कोई डॉगी को रेस्क्यू करवाना हो, वो सब करवाना हो तो वो भी मेरे DMs में आता है. तो वो फिर I reply to all of those for the most part. If there's some case that I know I can't help at all because बहनचोद पता नहीं पटना में हो रहा है कहीं हो रहा है तो वो भी हम खोल के I'll try to get that case some attention. If I can do something about it, I'll reply to each case that I can do something about at least to some degree. Otherwise, I think that's honestly good. You're like like using your platform for some some help. But obviously telling people मोटबाजी भी ज़रूरी है तो वो main चीज़ के लिए तो use कर रहा हूँ platform. Yeah. Secondary help is dogs and stuff, but मोटबाजी is primary. And forearm equivalence, like दोनों forearm equal होने चाहिए भाई वो ज़रूरी है उससे ही इंडिया बढ़ेगा आगे. सही है DMs तो पढ़ने चाहिए. I तो usually reply to every DM I get. Each and every DM. General पे डाल देता है. Yeah. General पे डाल के I reply to each and every female DM. Yeah, नहीं every. या बोल दिया इसने पकड़ा गया ये. every DM. हाँ अगर DP अच्छी है तो शायद प्राइमरी पे डाल देता हूँ लेकिन रिप्लाई सबको कर. अगर ऐसा है ना कि कुछ हे हाय like ऐसे हाँ नहीं that's what I meant by if it's a positive nice sort of अगर सिर्फ एक हे और हाई टाइप आया हुआ है तो I won't reply, and if someone's asking me something then I'll reply because with me it's mostly like कि bro ये कहाँ से है तो जब भी कोई रील डालता हूँ ना मैं लिंक लेके नोट्स पे रख देता हूँ because मेरे को पता है मेरे को 100 बार भेजनी पड़ेगी आगे. Oh that's nice. Yeah. तो मैं उसको नोट्स पे डाल के एक हफ्ते के लिए भेजता रहता हूँ एंड आई ट्राई टू कीप अ ट्रैक टू ऑल द DMs. आई वोंट रिप्लाई टू हे हाई और समथिंग वेरी चीप या कि I want to lick you. Oh, thank you. ऐसे भी एक दो बार आए हैं कि I want to lick you. एक दो बारी तो तू थोड़ा humble हो रहा है. I want to lick you or like step on me. वो जब जूता तू करता है बोलता है I want that. That's how I started. मेरे को inspiration यही से. Step on me. जब मैंने first time friend के पैर पे से रख के वीडियो बनाई थी ना I told him bro I stepped on you. मेरे को लोग यूजुअली लिखते हैं स्टेप ऑन मी यार मैं तेरे पे स्टेप करा है like cherish that. तो जो पॉपकॉर्न खा रहा था अब जाके चिराग ने भी स्टेप कर दिया. नहीं सही अरे वो तो मजाक में यार because I think my friends are the only people who are keeping me humble. Right. Because of course it can get to your head right at some point कि you're like insta famous and my friends are the only people who are like keeping me humble. Whenever I think bro I'm getting famous I tell them
कि ब्रो थोड़ी मतलब बेइज्जती करो, भैंचो हम्बल करो मेरे को, तो वो रात भर लेके केस रखते हैं, साले चूतिए ये करता था तू, वो करता था, अब आजकल तू बड़ा कूल बन रहा है चूतिया, ये वैसे करके ना मतलब बेइज्जती करते हैं लेकिन हम हम्बल कर देते हैं, तो बैलेंस रहता है. I always stay very low key. मेरा तो बेंचो आई स्टे हम्बल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई कैन सी दैट माय नंबर्स आर नॉट ग्रोइंग. जब तक मेरा मतलब 50-60 मिलियन नहीं हो जाते तब तक मेरे को लगेगा मैंने अभी तक कुछ Stop looking at the numbers, ना. I can't stop looking at the numbers because I know that's a direct indicator of how well I'm doing. So I'm like, it's not. It's honestly not. To me, until I'm in a different realm where the numbers are not what indicates my growth, then I'll be happy with that. But till then I don't think I can ever actually be like, वो मेरा 1-2 दिन के लिए मैं बोलूँगा कि मैं खुश हूँ, but फिर उसके बाद I'm like, okay, now I stopped growing, now I'm static, now I'm not growing this, that. So like I don't think I can ever feel like कि actually में कुछ हो रहा है, क्योंकि हमेशा I'll be like, oh fuck, अभी मैं इतने पे आर जब ना उतने पे, अभी मैं इतने पे वो वाला बंदा उतने पे. Like it's not like a comparison, but it's like you can do better, you can do better, you can do better. This isn't the ceiling yet. Indicator. Fair. Yeah. I look up to like positivity when it comes to growth. If I'm so like what keeps me going is that I'm actually holding a value in someone's life. Yeah. Because if a guy is looking at me and like buying something or like replicating a fit, or it's getting inspired by me, or like any outfit, even though it's very basic, and tells me about it, I'll be super happy, and that what keeps me going. Because I actually appreciate when like people come up to me and tell me कि मैं आपकी ये चीज़ देख के खरीदा था, और ये देखो मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है. That's pretty cute. Yeah, मैं बोलता हूँ मेरे पे कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. That's pretty cute. That's so wholesome. Yeah. एक लड़का आके दूसरे लड़के को बोल रहा है ये देखो कैसा लग रहा है. With guys, that's damn cute. Yeah. Male ego होता है ना, it's very rare. Yeah, exactly. That's why it makes it it cute. Yeah. So like unlike not only boys, but कोई जैसे लड़की भी बोलती है ना कि like I love your fits, वो तो भाई एक ही reason से बोल रही है. नहीं I want my boyfriend to like dress what the fuck भाई, अगर मेरी बंदी जाके किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को बोलते है I want my boyfriend to dress like you, वो तो harmless. अबे हट, तू तो भैंचोद बनियान पहन के घूमता है इसलिए तेरे को बोलती है. बनियान पहन के घूमोगे वो भी नीचे करके कि देखे यही होगा, और बिना पैंट्स के. तेरे को तो किसी भी कपड़े की भेज दे कि पहन तो ले. अबे नहीं, बट अगर ओपनली जाके मेरी बंदी किसी और को बोल रही है कि ओ मेरे को ये वाला तेरा आउटफिट बहुत पसंद आ रहा था, मैं तो आई वुड बी लाइक, even for like these glasses, ये जो ये Amazon के 250 रुपए की धूम मचाने वाले sunglasses है, I started wearing them and I like start posting on Instagram and people are buying it and people like tagging me in the post like कि bro क्या बढ़िया है यार, क्या 250 रुपए खर्चे उन्होंने लेकिन मेरा दिन बना दिया. चलो अच्छे भी लग रहे हैं भाई सब पे. वो affiliate link डाल देता. हाँ affiliate link डाल देता सबको देने के लिए. नहीं never, it's organic. What's your tip on, you're a men's fashion influencer, so what's your tip on like just our Gen Z men dressing better? Gen Z men dressing better. Huh. Yeah, like what's your like outlook on this whole fashion scene that's going on? Because nowadays people are obviously putting in more effort to dress better. Yeah, it's definitely a thing. Every other compared to person when we were younger, or you're also just a year younger than us. So like जब हम लोग छोटे थे, जब हम 17-16 साल के थे, उस टाइम पे तो बस एक फिट होता था, carrot fit, skinny jeans with loafers, a Gucci belt, skinny jeans, a tucked in Hackett shirt. Yeah, that was the that was a very tucked in Delhi polo. thing. That was like the standard Delhi boy. That's a very very Delhi thing. Like a standard Delhi boy outfit. बॉल में की टी-शर्ट and एकदम फंसी हुई, हाँ, पूरे exactly. बाइसेप फटने चाहिए उसमें. Exactly. And still going on, अभी भी ऐसा है. वो तो majority तो अभी है, but I'm saying still majority तो नहीं कहूँगा, like there's probably majority, but the minority has started moving towards whatever, like oversized t-shirts. And like what's your outlook on the whole thing? I'd say कि like find your personal style, get inspired by people, and if you actually like someone wearing something, try to replicate it. You don't have to spend a lot of money to replicate it. You can obviously buy like cheaper similar items, and you can easily like replicate the fit. And if it looks good on you, if you feel confident in it, then why not, right? You should always like keep trying something different. For like earlier when I got into this, I used to wear like like oversized clothes, but now sometimes when I don't feel like it, I'll wear something tight to it. It's not like oversized fashion, right?
I wouldn't wear skinny jeans for sure. That's not comfortable for me at all. और I'll काफी टाइम always काफी yeah, अब थोड़ा awkward हो गया वो. yeah, and I'll always like prefer wearing something loose bottoms के लिए, and t-shirt I'm wearing a very fucking tight t-shirt, like women's section का small size है, इतना tight है. हाँ. But I'm feeling it. मेरे को मजा आ रहा है वो देख के, ऐसे बॉडी भी दिख रही है, नीचे से खुली पैंट्स आ रही है. मतलब you should always be comfortable in what you're wearing. If you're not comfortable yourself in what you're wearing, then you can't call it fashion. So you can never call it So fashion. you're saying you don't have to go out of your way to feel like dog shit to look good. Yeah. Matlab, you don't. So there's no need to go out the way. Yeah. There's no need. You have to, like, look at this guy and spend 20K on a t-shirt and wear that. You don't have to do that. Yeah. Well, yeah, that's another, I want to ask you that also. What's your opinion on like high fashion, expensive, branded clothes? Yeah, I love it. But I feel like there's a but. There's no but. I can't afford anything. Yeah. Honestly, I can't afford everything. I can afford something. जब मुझे कुछ पसंद आता है, I'll buy something. हाँ. I know I want to treat myself. मेरे को लग रहा है कि यार ये बढ़िया लगेंगे 25,000 के जूते मेरे पे, तो मैं ले लूँगा. I'll be like, I'm treating myself. हाँ. You know? It's not that कि मैं हर हफ्ते ऐसा नहीं है कि मतलब लेना ही है कि देख लिया पसंद आ गया तो लेना. So what I usually do is मेरे को जब कुछ पसंद आता है, so I'll write it down somewhere. I'll look it after 2 months. अभी भी पसंद होगा तो ले लूँगा. It's like that. That's a good way to go. So like I recently like एक Balenciagas के like there's like grey and silver color के वो है sunglasses. I think I know what you're talking about. Them. Yeah. वो Doom style है? Yeah. Doom style है ना? I think I know what you're talking about. There's this guy I follow on Instagram. I think he rocks those a lot. I love it. I honestly love it, and it's been like almost a month. I've eye on it. Yeah. अगले महीने तक भी होता है, पसंद आता है तो उठा लेगा. Yeah. Because see, it's like more budget friendly as well, because you're actually thinking before spending money. I'm actually you can actually save and like make your way Yeah. कि अब इतना पैसा मैंने allot कर दिया उसके लिए और अब मैं जाके ले सकता हूँ. Yeah. So like what's your what's your नहीं मैं कहने वाला था, मैं पहले बोलना भूल गया था कि ये जो तो 150 रुपए के Amazon से चश्मे ले रहे थे, तेरे को पता है नहीं ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होते, तेरी आंखें भी खराब हो सकती हैं उनसे. इनसे just generally anything that has a lens on it. हाँ, तो ये पूरे दिन थोड़ी पहन रहा है भाई. पूरे दिन थोड़ी पहन ये बस दिखाने के लिए. Because I remember I would see like shades on like the street and shit. So my mom would be like, you shouldn't just buy any random shades because at 150 rupees mein they can put a fucked up lens, and if you wear it really often, it can like negatively affect your eyesight. No offense to your mom, but there aren't any lenses on this. Lens is very different. Lens is for like magnification and demagnification. That's it. But what if there's a slight number on these and they don't make it properly? That's you more can expensive. figure it out. ना पहनों की समझ आ जाएगा यार कि तो भिंचो zoom in And दिख to रहा है. do that is more expensive. You can't get a lens. You're telling me like This the is plain quality glass. of the glass doesn't make a difference. Quality of the glass is, I don't know if it's true or not, but I don't think it's important. Quality I of the feel like product is this more. might be a myth. Yeah, it is a myth क्योंकि myth तू busted. गाड़ी में पूरा बैठा है तो तू सामने दिख रहा है, तेरे को मैग्नीफाई कर तेरी मेरे आंखें को तब तो भी ये खराब पहन के होगा. मजा आता है, because I guess these are like polarized or something for 250 bucks. Yeah. And you actually like see better, clear दिखता है ना उससे. I don't wear it all the time. I have a few pieces that are like more expensive and like more towards the things I usually wear with. Yeah. I prefer that. When I'm buying something expensive, I prefer it's gonna be versatile. It's gonna be something I can wear with like Different every outfits. fucking thing. I was like, I got these. They're like pretty expensive for me. I got them for like 16K. That was massive back then for और ये me. धूम glasses ही लिए थे तूने? नहीं, धूम glasses थोड़ी है. ये तो normal sunglasses. Women's sections है. But these are also partially धूम. Yeah, kind of. These are like, so in my mind it was कि काले लूंगा यार, सब क्या जाएंगे. अब अगर मैं ग्रे लूंगा, I know I can wear the grey and silver मैंने भी वाले. women's section से ही लिए थे. Yeah. The shades I wear, Bro, those are also when from it the comes women's to- section. I prefer buying clothes from the women's section, honestly. Because they cater clothes generally Yeah. have If I'm more wearing- versatility if I'm with getting women. pants for myself, Yeah. I'll buy it from the women's section for Yeah. sure. My I won't go to the girlfriend men's always section. tells me कि तेरे को women's section से ये दिलाना पड़ेगा, वो दिलाना पड़ेगा. It's way better. They make more stuff for them, right? Generally, Yeah. the versatility. Variety is huge in the Yeah. women's section. अब लड़कों Zara में जाके like if I want to wear like buy pants for myself, जाऊंगा वहाँ पे सारी अभी भी वही होगा. हाँ, exactly, Skinny or, same. like हाँ. slim.
चाहिए ही नहीं, मजा ही नहीं आता पहन हाँ, के. हाँ, आई हाँ. गो टू वुमेन सेक्शन, वहाँ पे एकदम बड़ी लड़की बढ़िया, वाला. हाँ, वो मजा आता है देख के कि ओह पैर होता है ऐसे हाँ झूम नीचे. रहे हैं. हाँ हाँ. हवा आ रही है हर जगह से. वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. हवा वेंटिलेटेड रहने चाहिए टट्टे. Okay, Chirag, अब मेरे को ये बता, what comes next for you? What are you thinking? Do you have any plans on how you're going to take this content stuff forward? Have you thought of what can be added to what I'm already doing? Like, yeah, Chirag, so what comes next? What do we expect from What Chirag comes Khanna? next? Okay, so I have a few things in mind. Yeah. I look myself doing YouTube. Okay. Not right now for sure. Maybe after a while. But it won't be, like fashion related. It'll be, Lifestyle? yeah, it'll be probably like vlogs and, like me chilling with my friends and going out, having fun. Yeah. That's what it's all going to be about. I think that's, like if I'm doing only fashion on both the platforms, it'll like restrict me. you, yeah. And I'll get bored of it after a while. You there's no way you don't get bored of it. I feel like वो eventually. Yeah. But तेरी जो frequency है ना, वो मेरे को लग रहा है बहुत Yeah. sustainable भी है. Yeah. काफी. Because you're not trying to go balls to the walls. Yeah. Like see how fast I can grow, कितना ज़्यादा post कर सकता हूँ ये वो. For me, if I post a lot, I'll grow on a better speed. But you'll also then stop I'll enjoying the lose the fun out process of it. as Yeah, much. I'll yeah. lose the fucking fun out of it. That's very important. That's true. That's, has to that's be a fun. Big part of it. Yeah. Do you ever think of starting your own clothing brand? Maybe someday. It's in That's my not in your mind. head It's right in now. my mind since like 6 months, to be honest. But not a right priority. now. Not right. It's not a priority right now. I think I have a lot to learn about first. Then I can, like start something of my own. Once I'm there yet, I'm not there yet. Once I like feel like it, ki ab I'm there and I can like pull off. You're a there clothing brand. means that personal brand wise, like तेरी personal brand Both, कितनी बड़ी होती both है? ways, both ways. And to like be your honest, both knowledge of ways. the industry. Yeah, personal brand, of course, it's gonna help me. Yeah. It's gonna help the brand too, and of course, in terms of fashion too, I think I have a lot to learn right now. It's not because You're I. young. Sorry. You're young. Yeah, I'm young. I'm still evolving. I'm wearing every other outfit. I'm putting more effort. Every other week, I'm like thinking about it more. So once I have like the peak knowledge, I know what goes with what. Then I can like start. Yeah. Because if I start it, it has to be like like it needs good. to be good. Yeah. Yeah. There's no point in bit of a half-assing it. perfectionist Yeah, in that way. I won't do it for the sake of it. I'll do it once I feel ready. That's And fair. even for YouTube, I think I can start it. I really want to start like right now, but honestly, I don't have time for it because Yeah. if I want to start that, I'll have to do this full time, like content, which I'm not doing right now. Because for me, I don't think I can. I have to make a living out of it too, and I'm not there yet. I'm like still not making that much money. Ki I can live off this. Once I'm there, ki like I can use all the money and I can still have some money left and I'm making a living out of it, then I will start the YouTube channel. Then I'll start like vlogging and making good content on YouTube as well. But right now I don't feel like it because if I do it, I'll go broke, honestly. Because then you'll have to avoid Instagram a little to some extent. Yeah, no, not Instagram. Like I'll have to avoid the family business. And for that I have to. So for me, it's like Instagram जब यहाँ पे पहुँचेगा and I'm making a living out of it. अभी यहाँ पर है और यहाँ पे जब पहुँचेगा I'm gonna make a living out of it. तब मैं जाके एक ऊपर level पकड़ूंगा फिर YouTube शुरू करूँगा, right? I'll have to quit something for that. I'll have to quit family business there for will sure. definitely be a quitting point. Yeah. But तेरे को नहीं लगता उसको उस next level पर लेके जाने के लिए तेरे को थोड़े time broke रहना पड़ेगा? या do you think कि अगर इसी space पे everything keeps going then For you'll me, it's eventually like get there? I think after 6 months or maybe a year, Yeah. जब मेरे को लगेगा कि I'm like making enough money. तो देखो basically जल्दी नहीं है कोई. जल्दी नहीं है Yeah. कोई. like बहुत टाइम है भाई. Yeah. मतलब हर चीज ये नहीं कि भैंसो अभी के अभी करनी है. That's a good thing, honestly. Like सब that's कुछ- very opposite of my mindset. और सब कुछ एक ही ग्लास में सब कुछ फिल कर दोगे तो ओवरफ्लो करके गिर जाएगा भाई. Yeah. पहले पी तो लो भाई डाइट कोक अपनी. Popcorn खाओ पियो डाइट कोक थोड़ी. ये मेरा एक diverting from the topic, ये मेरा personal question है. Okay. I would have asked you this without being on the podcast also. One of my personal these problems while dressing up
Is color coordination. Do you have any way that tackle that? Like मैं बहुत monotone, मेरे को पता है black white के साथ जाता है, white black के साथ जाता है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता. Yeah, so I think you should like stick with neutral colors. जब the game is to have enough bottoms, to be honest. Okay. जब बहुत सारी bottoms हो जाएगी ना, it'll be so much easier for you to style a fit. Because for me, if I'm like building up an outfit, I'll start with the bottoms for sure. By I'll the bottoms, start do you with mean the pants or the kicks? Yeah, the pants. ठीक है, I'll start with the pant for sure. जब वैरायटी होती है ना, so even if you get confused, जैसे अगर मैंने एक पैंट पिक करी, एक टी शर्ट पिक करी, लेकिन वो टी शर्ट के साथ एक पैंट जा नहीं रही, I'll change the pant because मेरे पैंट्स बहुत सारी टी शर्ट्स कम है. That's the opposite of me. That's the opposite of I think anyone who's not a fashion. Yeah, I think the game is to have enough pants. Once you have like a like a different variety of pants की हर कलर में हर फिट की पैंट है, उसके बाद बहुत easy हो जाता है. एंड उसके बाद तुम किसी भी चीज़ से बिल्ड कर सकते हो आउटफिट. स्नीकर से क्या चश्मे से बिल्ड, अगर आज एक कलर के चश्मे पहनने हैं तो उससे भी पूरा आउटफिट बिल्ड हो जाएगा फिर. पैंट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बस अलग अलग कलर में वैरायटी हो तो ब्रो इट्स वेरी इजी. मेरे पास तो 4 जीन्स है. कौन सी? और एक पैंट है ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट और वो वाइट के डिफरेंट शेड्स है. थोड़े ज़्यादा वाइट है, ये थोड़ी लाइक अ लिटिल डार्कर वाइट, लाइक ग्रेइश. Yeah, are you into sneakers too? Not a lot. Like I'll buy whatever. Like I'm very mainstream with that stuff. कि मैंने ये जूते देख लिए, इसके साथ अच्छे ये लोगों को अच्छा लगता तो मैं भी ले लेता हूँ. Hype. हाँ, hype. I'm exactly like that. मेरे को interest नहीं है. I was like that. अबे but उसने मतलब he purchases like that, but he's not he's not exactly purchasing. हाँ, मैं इतना भी नहीं कि मैं किसी एक साल में एक बार ही वो कह रहा है कि लोग एयर फोर्सेस पहन रहे तो एयर फोर्सेस ले, वैसे कह रहा है वो. He's not my first and last Air Forces. Like वो वैसे नहीं कह रहा कि वो he has like 4 pairs of ones. Like it's not like मैं that. इसको पहन के जाता हूँ, पार्टी में जाता हूँ. मैंने जिम करे हुए हैं इनमें. Comfy भी है. हाँ. Air Force One pretty comfy. Bhai, mere to like for me it's like when I was a kid, right? So I was always into basketball. Okay. But before that I was always into skateboarding. So like when you see like kid pictures of me, you'll see me wearing a snapback, you'll see me wearing a tacky chain, you'll see me wearing a fat tongue pair of etnies, like baggy pants, low waist. Like when I was young, and that's when like all of these brands were kind of popping off. Supreme that time was just a skate brand. Yeah. मैंने किसी और episode में संचित के episode में भी बोला था, तो समझ रहे हो? उस time पे I used to be super obsessed with what I'm wearing. Then like I was also into shoes then, but I was more into like performance kicks. Basketball. I knew all the like the 1s and the 4s, Yeah. and I knew all of that stuff, the 11s and this that. But I was more into like, okay, now I want to get the Kobe 6s because they look good. I can play in them, and everybody around me was also sort of like that. So I've always like been aware of the culture, but I haven't been so influenced by it. Like right now also, my one like I feel like for winters I need to have what Doc Martens. Like for the winters, you need to have a pair of Doc Martens. Cultured. And for the summers, it's always I have 2 pair of Converse and I have a pair of Jordan 1s. And the Jordan 1s also my girlfriend bought me. Otherwise, you'll only catch me. I have like... That's the only Jordan 1, right? That's the only That one. means I stepped on your girlfriend's. The only, yeah. So, not her. She didn't buy them for me, but she was like, कि ये पहन क्योंकि थोड़ा cultured लगेगा, but clearly not. And yeah, I just literally नहीं आता है. Culture तो बॉलीवुड से आता है भाई. Exactly. है ना? ये हुई बात. रणवीर सिंह की तरह कपड़े जिस दिन पहनने शुरू हो गए उस दिन मैं cultured. कपड़ों में भी नहीं, बस बॉलीवुड की नॉलेज होनी चाहिए. मतलब if I say पानी, what will you do? I'll jump. Good guy. That means you're cultured. Yeah. अगर मैं किसी को जैसे randomly उनको ना पानी तो कूदेगा भी नहीं साला चूतिया फिर तो. Yeah. He's not cultured. भाई केशव को होना चाहिए था इस part के लिए. केशव is extremely cultured. Bollywood culture. He's as cultured as they You can get. ask him questions. Really? Dating back to 1990. वो dialogue भी याद याद रखता है. है वो भाई. बहुत cultured है केशव. सेम भाई मेरे को तो फिर आना उसने पड़ेगा उस दिन 4 बजे भी रेफरेंस मारा था इसने. याद है तूने 4 बजे कौन सा रेफरेंस मारा था तूने? कुछ तो बोला हाँ होगा कुछ. यार. अबे नहीं तूने मेरे को जिफ भेजा था सीन का. जे भेजा था सीन का. कोई रेफरेंस मारा था. हाँ मैंने भेजा था वो कुछ क्या उसका था ना परेश रावल का. हाँ परेश रावल का ठीक है याद आ गया. इन्होंने कुछ बोला था कि मुंडी टेढ़ी हो गई ऐसा समथिंग कुछ हुआ था. फिर मैंने वो वेलकम का उनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा था. ऐसे परेश ऐसे अपनी मुंडी हिलाता है. Yeah, so like my style is having तो मेरा वो यूनिक्लो का एक टैंक टॉप है जो मैं पहनता हूँ. मेरे पास उसमें 2 whites हैं, 2 blacks है, एक grey है, एक green है. So I have all shades and the ones that I wear very often उसके 2 है. And I have a few black t-shirts and my Converse and ये वाला black pajama. And you'll catch me wearing this every day, everything. That's the same outfit. Like if I go out,
tucked in tank top. Maybe I'll throw on a shirt over it and the same shoes. Yeah. And that's all. That's my fashion. Like to me, it's the simplicity. कि मैं हर बारी वो ही पहन सकता हूँ और वो ही पहनता हूँ. You're comfortable wearing it. Yeah, I just like wearing a tank top. At least I used to be jacked. Yeah. A week back, so like I'm like fuck it, I'm jacked. I'm gonna just wear this and that's it. Flex it. Like मैंने सोचा था बचपन में मैंने सोचा था before I got jacked कि मैं जब jacked होऊंगा और मैं fit होऊंगा तो मैं सिर्फ वो Calvin Klein की fat strap वाली चड्डी नहीं होती जिस पे Calvin Klein लिखा होता है अब वो discontinue हो गई है पहले मिलती थी तो मेरी सारी चड्डियाँ वही है मैं सिर्फ वही चड्डी पहनता हूँ आज तक मैंने बोला जब मैं jacked होऊंगा तो मैं सिर्फ वही चड्डी पहनूंगा चड्डी किंग तो फिर मैंने सिर्फ वही चड्डी पहननी शुरू कर दी अब मैं फिर भी चड्डी दिखनी है कभी नहीं क्योंकि शर्टलेस फोटो पोस्ट करते हो तो थोड़ा सा स्ट्रैप दिखता है ना सटल फ्लेक्स करना है और वो डेविड लेड और ये सारे उस टाइम पे वही वाली चड्डी पहनते थे अभी भी आई एम प्रीटी श्योर डेविड स्टिल वेयर्स दैट चड्डी द कल्चर इज प्रीटी हर्टफुल दो भाई मेरे को याद है मैं वी वाली पहनता था ठीक है अबे मैं भी वी वाली पहनता हूं भाई नहीं मैं पहनता हूं पर मेरे स्कूल में बहुत मजाक उड़ाया गया था दैट्स काइंड ऑफ लेम वी इज द भी लोग बोलते हैं भाई तू ब्रीफ क्यों नहीं लाया अपनी मैंने तो वही पहनी भाई नाउ आई ओनली वेयर दैट आई ओनली वेयर भाई दैट्स मोर कंफर्टेबल या इट इज भाई इफ आई एम वेयरिंग वो रोल अप हो जाती है हां वो रोल अप हो जाती है इट्स प्रीटी नॉट वो दिखती भी है फिर नहीं मैंने तो अभी रिसेंटली कबर्ड रीस्टॉक कर दिया मैंने एसॉस एसॉस हाँ तो एसॉस पे सेल मेरे को अभी मिली थी आई फाउंड दिस राइट नाउ मतलब ऑफेंड हो गया चिराग भाई बताओ आई फाउंड दिस वेबसाइट राइट नाउ ASOS व्हाट इज ASOS आई स्टिल डोंट इट्स जस्ट अ वेबसाइट क्लोथिंग वेबसाइट इज इट लाइक इन इंडिया आल्सो या इट डिलीवर्स वर्ल्ड वाइड ओके तो मैंने ASOS Fashion Nova oh ASOS is like the Fashion Nova equivalent yeah something like Okay. that so I ASOS has all sorts of Everything. brands no but ASOS is like ASOS is ASOS का खुद का भी ब्रांड है खुद के भी okay. कपड़े हैं like all sorts of brands too in the website it's like a I see. platform I see. So what I did was I shopped for it was a sale also going on so I shopped for 180 AUD that's 9,000 rupees okay 50 bucks for 1 AUD 9,000 rupees I got 9 t-shirts and one bottom मेरा पूरा साल का स्टॉक हो गया बहुत खुश था ये उसने मेरे को बोला भी था मैं कॉल करके बता रहा हूँ कह रहा सेल चल रही है बता तेरे लिए भी कुछ ले आऊं मैंने कहा भाई मैं तो वही ये पहनूंगा पता है क्या you should like also try thrifting clothes इंडिया में पर थ्रिफ्टिंग का कल्चर है नहीं ना ज्यादा ऑनलाइन तो है यार हाँ बट वो नहीं And है ऐसा कुछ भी नहीं इन है पर्सन थ्रिफ्ट स्टोर्स नहीं है ना वो बाहर मेरे दोस्त काफी थ्रिफ्ट करते थे जब मैं क्या बात कर रहे हो यार सरोजनी नगर जाओ कारहाट की जीन्स मिलेगी 200 रुपए में पता है बट इज दैट लेजिट Carhartt या व्हाट दे legit जस्ट Carhartt. सेकंड हैंड Sarojini, yeah, so the thing with thrifting is so apparently India is one of the biggest country when it comes to thrifting. ठीक है जो stock wise and हाँ. weight wise इंडिया में बाहर की कंट्रीज से बहुत टन ऑफ वेट का वो आता है thrifted clothes बंधे हुए गंदी कंडीशन में एकदम एंड सरोजनी नगर में आपको वो मिलता है यू कैन एक्चुअली गो देयर बार्गेन एंड गेट अ पेयर ऑफ बॉटम्स फॉर 200 rupees imagine. हाँ and they'll be And like if you so of course there are like online thrift stores too Yeah. if you don't want to get into the trouble of going to Sarojini Nagar get in a crowded place Sarojini is like clubbing जाना पड़ेगा भाई Sarojini is literally like तो कभी Sarojini Nagar नहीं गया हूँ but I haven't been recently to get like all मैं गुम गया था सीपी के पास तो मैं गलती से सीपी या दिल्ली में कहीं था मैं CP से दूर है कहाँ था मैं के पास हाँ खान मार्केट और somewhere I got a little lost then I by mistake reached Sarojini Nagar because I was looking for a Converse store. Okay. I was looking for a fucking Converse store because apparently this was when I was going for that Cosmo Award. So I was looking for a pair of clean Converses because I wanted the same old black Converse. तो मैं वो ढूंढ रहा था पर मेरे को ऑनलाइन नहीं लेने थे क्योंकि टाइम नहीं था. Okay. तो इन एम्बी नहीं है गुड़गांव में there was a Converse store. एम्बी क्यों बोलते हैं भाई यहाँ पे गुड़गांव के ambience लोग होता है तो एम्बी शॉर्टर क्या सिर्फ गुड़गांव के लोगों को सुनता हूँ मैं एम्बी दिल्ली वाले को भी एम्बी बोलते हैं. एम्बियंस बोलते हैं नहीं भाई वो हमारे एज ग्रुप में तो सब एम्बी बोलता है जीडी में भी सब एम्बी बोलते थे. गुड़गांव थिंग नो ब्रो दिल्ली में भी बोलते थे कि एम्बी प्रोमेनाड ये वो भाई मेरा सर्कल चूती है फिर तू स्टार्ट कर दे ना यू हाँ, स्टार्ट मैं ये तो इसको भी बोलने ये साला इन्फ्लुएंसर बहन चो हमें टर्मिनोलॉजी में भी और मैं इन्फ्लुएंस सालों करेगा. के सामने फिर कूल भी बनूंगा कि सालों मैंने बनाया ये फॉलोअर भी है और टर्म एम्बी भी पता है मुझे. नहीं जाएंगे तो दोस्तों बोल में दियो बोल बोका जाओ तुम और popcorn मैं खाओ. अब भी जाऊंगा मैंने तो छोड़ दिया भाई बहुत कम कर दिया अब
साला पिछले हफ्ते 2 बार ही गया था भाई तू. एक बार गया था भाई. देख रहे साले को पकड़ लिया. वो भी मेरे को पीयर प्रेशर में जाना पड़ता है ऑनेस्टली. जब दोस्त बोलते हैं ना कि भाई तू चूतिया है क्या, अपने घर पे पड़ा रहता है. अब तू क्लाउडेड है भाई. अब पीयर प्रेशर तू लगाएगा कि तुम मेरे घर आओगे. मेरा घर है बोका. मैं तो ब्रो वही ट्राई करता हूँ ऑनेस्टली कि बस तुम घर आ जाओ यार, मेरे को मत बुलाओ. मैं क्यों गाड़ी चलवा रहे हो बिन बात के इधर उधर जाने. अब भाई एक तो नॉर्थ दिल्ली रहता हूँ मैं. एवरीथिंग इज फकिंग फार फॉर मी. नॉर्थ दिल्ली है क्या? मेरे को आसपास के है क्या मतलब जगह है. डिफाइन द एरियाज अराउंड यू इफ यू डोंट वांट टू गिव अवे योर लोकेशन. वैसे हमारे सब्सक्राइबर 3000 ही हैं तो कोई आएगा नहीं. बहुत कम लोग देखते फिर हैं. तो ठीक है. आई लिव इन मॉडल टाउन. ठीक है. एंड देयर प्लेसेस नियर बाय लाइक पीतमपुरा एंड अशोक विहार एंड सिविल लाइंस. ओके. लाइक आई कांट प्लेस इट इन माय हेड. मॉडल टाउन में मेरा GD1 का एक दोस्त रहता है. तेरे को वसंत कुंज पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 50 minutes. 50. So it's like the opposite end of. Yeah. 50 or 15? 50. 50. 50. What the fuck? Damn, I that's know. far. So like जब when you came to Gurgaon, what like highway NH48 तुम्हारा कितना like time लगता है पहुंचने में? उस दिन जब देव का कॉन्सर्ट था, हाँ. it took me 1 hour to get back home. रात At के time पे. night? Yeah. Damn. So right now it's going to be a fucking journey. Yeah, 2 hours easy bro. ट्रैफिक में होगा भाई. अभी तो like कितने बज गए? बहुत ट्रैफिक होगा अभी तो क्या मरेगी. अभी आई थिंक दिल्ली जाते टाइम होगा. आई थिंक गुड़गांव आते होगा. गुड़गांव आते टाइम नहीं होता ना, क्योंकि लोग गुड़गांव से वापस जा रहे होते हैं ऑफिस के बाद. दोनों टाइम होता है. This is when you need a podcast, dude. 2 hours you would have heard a podcast. और तेरी अभी आया हूँ ना मैं, तो मेरे को मिल गया ट्रैफिक 40 मिनट्स का. हाँ. एक ही जगह पे. एंड अपेरेंटली कोई एक्सीडेंट हुआ था आगे. आफ्टर 5 मिनट्स मेरे को समझ आ गया ब्रो गाड़ी तो हिलेगी नहीं यहाँ से. फिर मैंने अपना फोन खोला, 2.5 मैन चलाया, सामने रख दिया, एक एपिसोड देखा. पूरा एपिसोड देखा तो हल्की सी गाड़ी चली. मैं कहा चलो ठीक है ब्रो. एक पूरे एपिसोड देखने के बाद चली? एपिसोड 28 मिनट्स बाद गाड़ी चली थी. ब्रो. मैं तो गाड़ी छोड़ के चल जाता भाई. सब कैसे आता तू यहाँ मैं आगे वाली गाड़ी ले लेता. मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? एक ही आगे गाड़ी लेता Bro, पूरे नहीं, ट्रैफिक पूरा चल के जाता. कम से कम नहीं तो 1000 गाड़ी आएगी मिनिमम. 1000 cars. Another 10,000 steps. yeah till the end walk it. last I गाड़ी was तक. honestly waiting कि क्या हो रहा है यार. मैं टाइम पे भी निकला हूँ, फिर भी. साला पंचुअल भी था आज के दिन पहली बार, वरना तो हर जगह आधा झूठ घंटा लेट. साले तू अपने वो रील बना रहा था, तू निकलने से पहले फिट की. यार वो मैंने पहले ही कर लिया था. मैं उसके हिसाब से रेडी हुआ था. सुबह 8 बजे उठ के Time वॉक करके. करने गया, वापस आया, नहाया धोया. मेरे को लगा चल अब मैं रील बना के इस टाइम पे निकल जाऊंगा. उस टाइम पे निकल भी गया. आई लेफ्ट अराउंड जब मैं देखो आपको लिखा था हाँ, कि around अभी 2ish. हाँ Yeah. आई लेफ्ट कि अब 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा. और क्या रास्ता छुदा हुआ भाई. वापस जाते टाइम भी भाई होगा. हाँ वापस आते मैं हर बार अपने आप को बोलता हूँ ब्रो अब अगली बार से नहीं. But Gurgaon is like alcohol. It keeps No, but keeps that's you the coming same back. thing. That's the not for me, trust me. that's the same thing for us. We don't go to Delhi that often because it takes so long. Yeah, I can't. You Dude, guys Del- don't go to Delhi? Not that often. dude, there's like for Gurgaon people like दिल्ली जाना अगर तुम्हारा वहाँ पे कोई दोस्त नहीं है तो क्या पर्पस है? हाँ. Max I'll go is till MG Road. वहाँ पे हमारा रॉक क्लाइंबिंग वाली जगह है. और बीच में कभी मतलब बहुत रेयरली प्रोमेनाड या एम्बी में अगर कोई दुकान है जहाँ जाना हो. Otherwise, we don't go clubbing, so we don't really make it down to Delhi ever. Exactly. कोई purpose ही हम तो नहीं. यहाँ एक दूसरे के घर ही, हम तो सोना रोड से भी नहीं निकलते भाई. हम तो इधर ही घूमते रहते हाँ हैं. ये वो सोना रोड की स्टोरी बता रहे थे. ये स्मैश गए सोना रोड वाला बॉलिंग करने. बॉलिंग कर रहे थे, साइड से एक बंदा आके एक नहीं पूरी स्क्वाड आ गई थी और वो सब सोच रहे कि फ्री है सब कुछ. अली ऑक्यूपाई कर सब ली. बॉल उठा के सारी लेन्स पे चले गए. एक लेन पे नहीं हाँ, गया. they चार started बंदे all. डिफरेंट लेन्स पे खड़े थे. और वो फेंकने लग गए भाई. फिर हमने बोला भाई लाइक अभी खत्म होगा फिर आपको वहां जाके टिकट लेनी है फिर शुरू करना है. सारी पार्टी हो गई भाई इनकी. मैं भी क्या इतने टाइम बाद बॉलिंग करी थी. ये जब सब अभी आए थे ना, हाँ. हाँ मैं सबको पहले डिसीव करा. मैं सबको बोला कि ब्रो मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, मेरे को बॉलिंग नहीं आती, स्काई कार्टिंग नहीं आती, प्लीज मेरे से मत करवाओ. सबकी गांड मर गई. इतना देख के मजा आया ना. एंड में मैंने ऐसी स्मोक करी कि सालो जाके तुम पॉपकॉर्न खाओ भाई. आ गए तुम, बोका जाओ तुम, मैं बॉलिंग करूंगा. उठकर आ गए हो तुम यहाँ पे. खेलना तो मैं आता नहीं है. अबे चिराग की स्पेशलिटी यही है. वो वीकेंड में क्लबिंग वबिंग नहीं जाता. इसके दोस्त सारे बाहर होते हैं. स्मैश में अकेला बैठ के लैप्स कर रहे होते हैं. भाई सबको थोड़ी बताना है. अब तो 3000 लोगों को तो पता चल गया. Shit, अब कोई बॉलिंग ही नहीं करे भाई. ये जीत आया था बेचारा बॉम्बे से. हाँ 2 बार हारा दिन में. पहले बॉलिंग में फिर स्काई कार्टिंग में. रात को बंदा मेरे को सुबह 4 बजे कह रहा है कि एक पूल का मैच भी हो जाए घर पर. हाँ ब्रो मैं बहुत गंदा हूँ. कह रहा है तू चूतिया बना ले साले. बॉलिंग में भी दिन में भर भी तूने चूतिया बनाया है. खेलना आता नहीं आता. मैं कहा सही में गंदा हूँ. एक मैच करा, पूरा मैच में हारता रहा उससे.
आखिरी में जब उसको लगा ना वो जीत गया, मैं कहा क्या लगता है तेरे को, तो जीत गया? कह रहा ब्रो अब तो मैं जीत ही गया, रुक चूतिया देखो दिखाता हूँ मैं वो You सही है। hustled him. पर सट्टा थोड़ी लगाया था, तो mentally hustled. I Mentally wanted to hustled. deceive him, bro. I wanted to deceive him in the beginning and then outshine later. मैंने एकदम वही करा, एंड में हारने के बाद उसकी शक्ल ऐसे हो गई नीचे। ये सोबर लोगों के मजे इसी से आते हैं भाई। ये सारी बहुत गंदी गंदी मजा आया चीजों उसको से। देख के स्ट्रगल करते हुए यार, उसको वो बेचारा इधर उधर तो फिर बॉम्बे शिफ्ट हो जाओ, वहाँ बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं रोल्स के लिए। Yeah, I think even you asked me about the future, right? I see myself like acting also. How come? I don't know. I've been inspired by Bollywood my whole life, to be honest. I never saw myself, like acting. I did a few auditions recently. Didn't get in, of course, because Yeah. aata nahi. But some point of time, मैं सीखूंगा for sure. Acting, I'll try. I'll like do a few workshops, and of course, I'll try that. Do you like the process of acting? Do you think it's fun? I even for me, even like modeling is pretty fun for me. I've done a few shoots, and it feels like vacation, to be honest. If Like I being on have, set and if I having all these have people around you. 8-hour shoot, it's like a vacation for me. I'm actually Yeah. having fun there, and I'm earning money. घर जाता हूँ मजा आता है यार कि क्या दिन बढ़िया निकला मेरा आज, ऐसा नहीं लगता कि यार like टाइम वेस्ट कर आ गया. I don't know, I just don't feel like I'm controlling enough for it to be fun for me. समझ रहे? Like अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो I want the process to be in my hand. Like if I'm making a reel, then the creative process is in my hand. But if somebody else is directing me, I don't like that. I want the creative process to be in my hand. I want what I'm saying to be in my hand. I वो can मेरे को never ज़्यादा मजा work. आता I है। can never shoot a reel if someone is watching me. कोई मेरे को आके बोलेगा ना ऐसे कर वैसे कर, मैं नहीं कर पाऊंगा. But want acting my acting will tripod be and that only. Yeah. Acting will be just that. Yeah, that's why I want to learn. Dialogue भी किसी और के होंगे, Yeah. direction भी Yeah. किसी और की होगी, script किसी और, That's why story I किसी और की होगी. really see myself, like learning पहले, उसके बाद trying, and if I get in, of course, that's amazing. But yeah, obviously having an edge on the other people with no clout is like having a platform, having a Instagram following is going to help you in a lot. Yeah. It's helping right now to Instagram, like changed my fucking life. Of course, yeah. It changed I never saw myself, like doing these things. पहले 2 साल पहले I never imagined कि bro, Did you ever imagine people coming up to you and asking for pictures? Never. Yeah. Never. Honestly, never in my fucking life. When it happened, it was very Crazy. overwhelming for me. Yeah, I'm sure. It was like कि कुछ तो यार I'm doing something good. Yeah. Right? I'm doing something good. Even though it's not sustainable enough, but it's very fun. No, but it's not sustainable enough, but it gives you a start, right? फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है तो वो तो कुछ भी कर सकते हो. The thing is, Instagram opens so many doors for you. And then it depends on which one you wanna forever go in. Mad. Yeah, of course. Mad. Even like it's acting or modeling or any fucking कुछ thing. भी भाई, whatever form of You're gonna start a entertainment. fucking business too. Yeah, start of from course. Instagram. Instagram opens so many doors for you. And I feel like once you're like famous on Instagram, you can do so many things with your life. वो तो फिर जो भी मने कर सकते हो. जो भी मने कर You सकते can actually make that following. Yeah. You can translate it into anything. Yeah. That's the fun part of it. And I don't like earn enough from Instagram because I'm very selective with the brands I'm working for. I know, but that's good that you aren't, because yeah. वो मजा नहीं आता भाई फिर अगर कुछ random बकचोदी कर रहे हो. नहीं, I'm very selective. If it comes to a brand campaign, I really have to like believe the brand. Yeah. I have to believe the products they're selling. If I'm doing a campaign with like any random brand, तो मेरे को पहले product use करके देखूंगा, या if it's like clothing, I'll actually like order पहले देखूंगा, आया अच्छा लगा, I'll do it for sure. हाँ. Otherwise अगर जैसे कोई पेड कैंपेन है, मेरे को बोल रहे हैं ये कपड़े पहन के डालना है, मैं देखा, मेरे को मज़ा ही नहीं आया देख के कि क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है. I respectfully like tell them कि I'm not gonna go through with it. No disrespect, but I don't feel it. Personally vibe with it. Yeah, because if I'm like like using it as a platform for earning, then I have to believe in it too. I can't be like fake to myself just for the sake of money. Yeah. I agreed with it to a certain degree, but I don't really give a fuck because
अगर मैं कुछ भैंचोद प्रमोट कर रहा हूँ Your तो niche is completely different. अबे उनको right? लोगों को पता है कि वो मैं प्रमोट बेसिकली सिर्फ थोड़ा रोकड़ा कमाने के लिए कर रहा हूँ, सो आई Yeah. कैन कीप दिस मेक दिस अ लिविंग. अदरवाइज पीपल आर कमिंग टू माय फकिंग चैनल टू बी लाइक, ओ यार मेरे को इस ब्रांड के कपड़े लेने हैं, मेरे को Yeah, ये वाला yeah, प्रोटीन पीना है. yeah. लाइक लोग तो उनको पता है कि ये बकचोदी कर रहा लोग तो कहते हैं वो पनीर आज पनीर खाएगा अनमोल. वो सबसे कॉमन कमेंट होता है. तो लाइक एवरीबडी आल्सो नोज दैट इफ आई एम प्रमोटिंग समथिंग जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज़ वंस इन अ व्हाइल आई विल डू अ प्रोमो Yeah. and that's to keep just Yeah. like Cash afloat. flowing. Yeah, just to keep Yeah, afloat. it's fair. Same. पहले मैंने यही सोच के शुरू करा था, फिर उसके बाद I got very selective. I thought बट तेरे तो एक्चुअली में तेरे नीश वाले भी आते होंगे yeah, ना. yeah, that's अगर right. मेरे को कोई बोल रहा है कि लाइक किसी और का कंटेंट You प्रमोट can करो promote और- anything. yeah. With your But यार content, you can promote any fucking thing because you're a funny guy yourself. आने भी तो चाहिए ना. नहीं, but that's what the brands think ना कि तू you're doing comedy now. A fashion brand like a decent fashion brand that would go to him is not going to come to you saying promote our Yeah, clothes, that's right? what, that's what. So exactly, तो वो brands भी फिर मेरे पास like I won't like for me what are like I can't really be like कि मैं वही करूँगा जो मैं use करता हूँ, क्योंकि मैं day to day क्या use करता हूँ. I use a fucking iPhone, I use a Shure mic, I use a Mac. Like what do I like? I'm not really using any of those day to day products जिनको मैं actually में promote कर सकता हूँ. जैसे अभी Apple तो आने नहीं वाला. फेस वॉश का मैं जो निविया अगर आ गया तो चल ठीक है, मैं निविया का फेस वॉश यूज करता हूँ. ये दैट Apple आके क्या बोलेगा इनको? मुठ मारो. दिखा लैपटॉप पे कौन देखता है ना. किस पे देख रहे भाई हो? हमें कंटेंट ऐसा देखना है तुमसे अनमोल, जिसमें तुम पॉन देखोगे हमारे फोन से और हमें देखना तेरी आंखों में रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए आईफोन की. टिम्को का है ये कुछ ब्रांड्स की तो भाई एकदम ही एक्सेप्शनल वो होती है डिमांड्स की, कुछ भी मतलब. हाँ अबे मैंने and some of them just have an idea of what they want to make in their head और वो तुम्हारे ऊपर बोलते हैं कि यही कर. तो बहनचोद में I feel like क्या creative फायदा freedom is उसका? very important. Yeah, exactly. It's the Very most fucking important. because if a brand is like willing to give you the full freedom to do something, that's actually going to work for them too. That's what AMK को भी like we talk about this a lot कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम बहनचोद फिर just buy a spot in a fucking TV commercial if you know exactly what you want to Yeah. do. मेरे से क्यों करवा रहे हो फिर? और क्या It's खुद different shoot if करवा these, लो that's यार. what we spoke about. It's different when you're a YouTuber and a brand comes to you, Yeah. because then you just have like a 20-second spot where you need to advertise. Incorporated हमारी तो पूरी रील होती है. रील 20 सेकंड की होती है भाई, तो पूरी रील ही यही होती है तुम्हारी. Like our whole concept is going to be based around that product. We can't be like कि मैं vlog बना रहा हूँ 10 मिनट का, उसमें 20 सेकंड का एक plug डाल दिया. हाँ. Is there any brand you don't like? I'm forgetting You there was like worked with? there was this one brand I'm forgetting. Don't name it. Don't Yeah, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा. क्या? But वो बहनचोद बहुत दिमाग खा रही थी, कह रही थी कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है. फिर उसके बाद eventually I just said fuck this, like I'm not gonna do it. Yeah. क्योंकि भाई वो उनको exactly यही बनवाना था. मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल भी मेरे फीड पे नहीं Yeah. जाएगा. ये तो लोग बोलेंगे कि एकदम this is not remotely funny. This is just एकदम different है. like motivational and this that. Like how the fuck am I gonna pull that off? If I wanna pull that off genuinely, मेरी कोई स्टोरी सुना के तब तो समझ आता है, बट भैंचो तुम्हारी स्टोरी सुना के मैं कैसे मोटिवेशनल बना दूं उसको? ये तो बकचोदी है. With your like content, you have to like get the script approved as well. ये सब चीजें भी तो होती है ना कि script You guys don't have script you don't have a approvals? script ना. Then You don't have a script. We Just have कपड़े the पहन लिए flow. और- हमें फ्लो समझाना है क्या होगा वीडियो का. If they like it, then yeah. हमारे को तो लाइक ऐसा होता है कि डायलॉग वायलॉग की स्क्रिप्ट भेजो, फिर उसमें मतलब कैसे yeah हमारे कि we have to send like background approvals of course. Background क्या होगा वीडियो का and क्या पहनोगे उसका approval चाहिए पहले. If they approve it कि ये कपड़े सही है and ये background सही है, then you shoot it. You explain them the flow of the video first beforehand, before shooting of course, to like minimize any reshooting everything. या हमारे को तो यार वो मांगते हैं कि स्क्रिप्ट दो, फिर उसमें कौन से पार्ट में इनकॉर्पोरेट करोगे, ये बताओ वो बताओ. बट या एनीवे, तो चिराग, do you have a message for all of your fans who are watching right now? Message. So One honestly, I'm getting out of my comfort zone to do this. ऐसे इतना कैमरा में ऐसे बोलना, but I'm honestly doing this just for the sake of me getting better, just because you like me more. So I honestly care about you. So चिराग खन्ना, guys, thanks for coming. चिराग, मजा आ गया. भारी एपिसोड बैठे हैं. I hope you had fun. firm handshake. always has to be firm. That's a big indication of the man you are, and a small penis. You have to compensate somehow. How was your first experience on a podcast? मजा आया तेको? Yeah, it was. Guys, obviously he's going to say that on the pod,
बाद घर में जाके बोल रहा है कि नहीं bro, I'm at the Podstarz. At the Podstarz, exactly. Very overwhelming. मजा आया, time pass भी हो गया, बकचोदी भी करी. Fuck yes. well, Appreciate you worth- coming, Chirag. worth the Appreciate you drive. making the road trip down to our little town we call Gurgaon. Anyway, guys, that's been episode 11 of the Podstarz, where we have the biggest headphones, we have the biggest microphones, but we have the smallest penises. Right. Peace.